Hello, 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 and welcome everyone to the SYWK podcast YouTube channel. And also welcome again to my live stream. So, off lately, I have started live streaming on YouTube, and it's going to be a fun session today because if you have not watched my previous live session where I reacted to some ghost pictures which was caught on camera, I'm basically going to do the second part of this. So there are many more ghost pictures caught on camera which I'll be reacting to. I have even tried to research something like some videos which is what am I talking? I don't know what am I talking. But you'll see the fun. So basically for the first 5 minutes I will be just doing time pass. I'll just check if my microphone is working. Yes, my microphone is working. And if you are watching this after the live session is over, so to start with the ghost pictures of my reaction, you can start it from after 5 minutes. So at least for 5-10 minutes, I'm going to do fun. Leon D'Souza. Who's this Leon D'Souza? I don't know who's this Leon D'Souza. Oh, Leon D'Souza. Hi, Leon D'Souza. Hi, Rosie Fernandes. Welcome to my stream. I am just going to do some time pass, going to talk nonsense, and it's just going to be a shit live stream. So if you want to just do nothing, you can enjoy my stream. Everyone is plastic here. Everyone. Okay, there is Lavina as well. Hi, Leon. Hi, Lavina. Hi, Rosie. Everyone, Leon, Lavina, Leon, Lavina. Recently, we celebrated Leon's birthday. It was a good celebration. We went for camping. It was fun, extremely, extremely fun. So, guys, if you would like to share your ghost story, or if you just like to come and just have fun on the stream, the link is in my description. Okay, click that link and join the live session. It's going to be fun. Okay, so now currently it's 7 minutes since I have started live streaming and I'm talking nonsense. I'm just talking shit. But let me talk something more shit for a while. So for people to join in. So for people who are watching me for the first time, my name is Desmond and I run a YouTube slash podcast channel. It's called as SYWK, something you want to know. So, if you are a horror fan, if you would like to hear ghost stories, horror book narrations, interview of horror authors, especially the Indian authors, you can find it on my channel. And my content is available on YouTube as a video podcast, has also available on Spotify, Apple Podcast, and all the podcast platforms. Go check it out. So now let's wait and see who all are come. Leon is there, Lavina is there. So yeah, for people who don't know, you first need to check my previous live stream, which is the last one which I did last week, where I reacted to some ghost images. So this is the second part where I will be reacting to some more nonsense ghost images. So it's already 8 minutes past, and let me try to start with my nonsense. Okay.
Okay, just give me a minute since I am alone here. I need to figure out everything on my own. I don't have anyone right now. So I'm pressing share screen, and this is a new streaming platform which I've been using. It's called as Melon. There is another good friend of mine. His name is Swapnil from Aviral Horror Stories. He has suggested to use this, and I'm enjoying this. It's same like StreamYard, but it has much better features. So what we are going to do is we are going to react to some of the horror, not horror, what I'm saying, we are going to react to some of the ghost captured on camera. I don't know what am I saying. But before you get bored and leave the stream, let me start with the nonsense. Okay? So here we go. So this is the continuation. It is from a website called has pocket-lint.com. It is all the famous ghost photographs ever taken from the internet. And I'm going to react to this. So the first image is the pink lady. Okay, pink lady, pink lady. So let's see what is this. Okay, guys, can you see any pink lady in this photograph? I cannot see any pink lady. Yes, I can actually. If you go to see, I can see a pink lady. Let me try to zoom in little bit. Uh, Last stream, a friend of mine whose name is Priyanka, she told me that zoom in when you are reacting to the images. But yes, I can zoom in. Yes. Okay. This is a pink lady which I didn't understand. The photo seemingly shows a ghostly woman bathed in pink. Eh, this is just. Yeah, dude, I can see a female right now here. I can see. Anyways, I cannot I cannot understand this photograph. So let's go to the next photograph, which is a demonic spirit on a hospital bed. Okay. A demonic spirit on a hospital bed. Oh my god. I can see a bed and I can see a creature kind of thing which has two legs and something on top. But it can be an animal. It can be a monkey. It can be no. Monkey is not so big too. Very weird. What do you guys feel? The demonic spirit on a hospital bed. What do you feel? Is this true or is this not true? Please, let me know in the comment section, please. The demonic spirits on hospital bed. Okay, once again, now before going ahead with the next photograph, I would like to say if anyone would like to join the stream, please, the link is in the description. Click the link, come share your ghost story, or just talk anything about paranormal. I would be happy to get you on my show and we can talk something rubbish. So let's go ahead with the next photograph. Girls in Manila. Manila. Okay, this is a photograph of two girls and there is a hand. Oh my god. This is scary, man. This is extremely scary. This is in Philippines. Okay, it was also taken on a digital camera, so it can't have been the result of double exposure. See, I know a friend who's a photographer, and even sometimes even we click photographs, and if a person is moving extremely fast, then this kind of image gets captured. So I don't know how far this is true, but since the website has said, I don't know. I'm not going to believe this shit for sure, but it says it is clicked in early 2000s, so
I don't know if this is uh, haunted or this is not haunted. Oh my god, William Mumble, 1860s. Okay, if you see this photograph, there is a female's photograph. I mean, not photograph, you can see a figure of a female. But what I feel of this photograph is that this might be this might be two photograph combined to one, and that is why that reflection is there. I'm not sure, I'm not an expert, but this is what I feel. Leon is saying hairy monster. Who's the hairy monster? Okay, I feel all these photographs and this is all yeah, bullshit photograph. This does not make sense at all to me. I don't know why am I even reacting, and I don't know why you guys are even here. It does not make sense. See now, this photograph which I am going through, the brown lady, 1936. Okay, now this is a photograph of a staircase, and you can see a white figure on that. But it feels like someone has put a blanket on themselves and walking down. So England 1936. What do you guys feel? You feel that this is no, I am stopping this nonsense right now, because the photograph what I'm going through does not make sense at all. It does not. It does not make sense at all. Show on the stream. Okay, there is someone who has joined in. I don't know exactly who is this person. Hi Desmond, Aviral this side. Hi. Sorry, I'm new to this streaming thing, Melon, so I could not see. नॉट an issue. So डेसमंड यार एक थिंग मैं एक चीज मैं कन्फेस करना चाहूंगा कि यार मैंने Bolo. आपको मतलब जस्ट 20 days पहले फॉलो करना स्टार्ट किया है एंड आई थिंक Hmm. आई मस्ट से कि जो आपका द वे ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज फिनोमिनल. I guess you remember that guy Robin that came on the Yes. screen. I'm Yes. that one. It was me from my other email ID. So you're changing So your names and you're no, stalking no, me. that's all right. You can say even that. But ये भी कह सकते हो ना यार. I have given you 2 subscribers. I have given you an Ah. additional subscriber. So make 10 more accounts, aisa na? हाँ So I'll हाँ, at no least issues. cross 1,000 subscribers. Sure. I will. I'll take the charge and make sure it happens soon. I was just going through the website where it says that famous ghost captured on camera. So the Yes. first 15 photograph which I did in my previous stream, it was interesting, but the remaining photograph is very boring, and even I think someone the has photo, yeah, that yeah. photograph that you showed in your stream, that lady who was coming, whose figure was captured while from the stairs, Hmm. something like that. I think वो जो photograph थी ना, एक book थी, that was called World Famous Ghost Stories. So this photograph has been there into that book, and I Oh. read that book almost 14, 15 years back when I was in my school. The So I brown lady. remember, yeah, the brown lady. This picture was there in the photograph, and there was a story attached to Hmm. this picture that was given in that book. So I remembered the photograph and I saw that. So I just it was nostalgic चीज हो जाती है मेरे लिए, because that was the Hmm. time कि actually मैं थोड़ा अपना background बताता हूँ, so you would be able to relate why I'm so much interested into horror. Hmm. Actually my grandfather is he's an engineer. So he Okay. went to Germany in the late 50s. So he has a very German kind of attitude. So he doesn't believes in all these things. And my father Hmm. is a doctor. So I mean हमारे घर में थोड़ा साइंस वो ज्यादा डोमिनेट करता है और इन चीजों को लेकर बात नहीं होती है, बिकॉज नो दे बिलीव कि अल्टीमेटली जो पर्सन साइंस में बिलीव करता है वो उतना इन चीजों को नहीं मानता है. So yeah. So
हाँ, so they whenever I tried talking about this, they used to brush me off that अरे कुछ नहीं होता बकवास है. But that's what gave me a kick. मैंने कहा यार, if they are saying there's nothing, and that means कुछ तो होएगा इसके अंदर. So my interest into horror came in I think it was 2012-13 when I heard about that Mr. Gaurav Tiwari was the हाँ. famous paranormal investigator. So I had seen his videos of that Bhangad investigation. So that's how मेरा इंटरेस्ट वहां से आ गया कि यार एक बंदा है, वो पायलट है, उसकी मतलब बहुत हाईली एजुकेटेड है, बट स्टिल ही इज बिलीविंग और बिलीव नहीं कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू प्रूव द एग्जिस्टेंस. सो हम्म. आई स्टार्टेड फॉलोइंग मिस्टर गौरव तिवारी एंड उसके बाद फिर मैं जो हॉरर कंटेंट जो भी आता गया कंज्यूम करता गया. जैसे होता है ना दैट सम पीपल हैव अ स्वीट टूथ, they like Correct. something sweet after eating after dinner. हम्म. So I have a horror tooth because I like horror stories after my dinner. So मेरा ये है कि whenever I come back from my office, I just have my meal, have my dinner, and switch put my phone on the flight mode, and then I start switching into the podcast. So हम्म. I came across Mr. Jay Alani, और जय Alani की वीडियोस के थ्रू मैं आपके उस पे पहुंचा. वाओ. हाँ, अच्छा और है. एक, हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. आपने उस दिन एक वो स्टोरी सुनाई थी दैट फ्यूनरल वाली स्टोरी की, जिसमें एक पर्सन था जिसके फ्यूनरल में एक बच्चा गया था एंड उसने उसके ट्विन को देख लिया एंड ही गॉट हम्म. स्कैर्ड. सो देयर हम्म. हैज बीन एन आइडेंटिकल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सिचुएशन विद मी कि एक्चुअली मैंने शायद उस दिन बताया भी था उसमें कि इवन आई हैव स्टेड इन वसई फॉर ऑलमोस्ट हम्म. 14 years. सो मेरी स्कूलिंग वगैरह शायद वसी साइड हुई है. सो देयर वाज अ जेंटलमैन, वो हमारे बिल्डिंग में रहते थे एंड वो गूंगे थे, वो बोलते नहीं थे, बट स्टिल ही यूज्ड टू अडोर मी अ लॉट. ही यूज्ड टू हम्म. गिव मी टॉफीज एंड मतलब बहुत, मतलब देयर वाज समथिंग कि ही यूज्ड टू कम एंड व्हेनेवर आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द बिल्डिंग ही यूज्ड टू कम गिव मी समथिंग एंड ही यूज्ड टू गो अवे, ही वुडंट टॉक. सो वन डे आई फाउंड आउट कि दैट ही पास्ड अवे बिकॉज मेरे फादर एक मेरा रात को आए, एक उनके नेबर थे जगाने कि मेरे फादर वाज अ डॉक्टर. सो वो आए कि प्लीज आप देखिए कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो पता चला कि ही हैड पास्ड अवे, उनको एक हार्ट अटैक आया था उस जेंटलमैन को. सो नेक्स्ट हम्म. डे थोड़ा क्या होता है कि जैसे मुंबई में, मतलब वहां पे क्या था कि एक फ्यूनरल जब उनका हुआ तो काफी मतलब बिल्डिंग में उनसे लोग अटैच थे. सो पीपल वर वेरी, ही वाज अ वेरी वेल कनेक्टेड गाय, तो बिल्डिंग में भी मतलब पीपल वर बहुत, मतलब बिल्डिंग भी स्कैटर हो गई ऑलमोस्ट. बिल्डिंग की जो पूरी मूवमेंट थी रुकी हुई थी उस टाइम पर जब उनका फ्यूनरल हो रहा था. तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं 4 या 5 साल का रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस डेथ, व्हाट इज डेथ. मैंने वो उस चीज को उस टाइम पर देखा एंड आई अंडरस्टूड व्हाट इज दिस डेथ फिनोमिना. मतलब सुनते थे बट वो एक अंडरस्टैंडिंग आती है ना, हिट करती है चीजें आपको. तो दैट वाज द फर्स्ट. फिर कट टू फ्यू डेज लेटर, हुआ क्या कि मैं, हम्म. रात का वक्त था और बिल्डिंग में, मतलब क्या होता है मुंबई में तो थोड़ा लेट तक चलता रहता है, क्रिकेट विकेट खेलते रहते हैं लाइट वाइट में. तो जब तक घर वाले बोले कि चलो वापस आओ तब तक नहीं आते. तो मैं सीढ़ी चढ़ रहा था और ऊपर से एक पर्सन उतर रहा था एंड जब हम्म. मैंने उस पर्सन को देखा ऑलमोस्ट मेरी चीख निकलते निकलते रह गई बिकॉज he was that same guy who had passed away a few days back and I had अरे seen इसकी माँ him का. and I was shell shocked कि बॉस ये क्या हो गया. बट देन हम्म. मम्मी, मतलब मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार ये क्या देख लिया मैंने, मतलब भूत वूत था. अच्छा मैं डर गया कि भूत, मैं गया फिर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज जस्ट 4 years old. मम्मी पापा पूछा क्या हो गया क्या हो गया. मैंने कहा हिज नेम वाज मिस्टर माइकल बॉस्को. मैंने कहा मैंने माइकल अंकल को देखा था मैंने, अभी आ रहे थे. मेरे पेरेंट्स भी शेल शॉक मिला, ये क्या चक्कर है. फिर ये बात बिल्डिंग में होने लगी कि यार मिस्टर माइकल की आत्मा घूम भटकती है. हाँ. फिर बाद में जब उनकी ओके. फैमिली तक बात पहुंची तो दे क्लैरिफाइड कि ही हैज अ ट्विन ब्रदर. तो मैंने उनके ब्रदर को देख लिया था एंड दैट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट पूरी बिल्डिंग में खबर फैल गई कि वो हॉन्टेड है. तो व्हेन आई हर्ड योर स्टोरी दैट डे, आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट वेरी वेल. एक No, but इंसिडेंट है that is बड़ी quite scary. हाँ, बोलो ना, वेरी, बोलो. यस, एक इंटरेस्टिंग है बड़ी स्टोरी थी. मतलब उसमें हॉरर भी और फनी भी है. वो मेरे प्रोफेसर हैं हम्म. कॉलेज के, एक्चुअली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है. तो हम्म. हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, ही वाज इन जेएनयू, ही इज फ्रॉम जेएनयू. तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज बट फनी बहुत है, तो जस्ट एंजॉय. ट्रुथ का मुझे नहीं पता बट मुझे बड़ा फनी लगा, सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग. कि एक हम्म. बार क्या हो गया कि ये लोग ह्यूमैनिटीज वाले थे, तो ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा मतलब गॉसिप्स का बड़ा उनको वो होता है, और साइंस वाले बिलीव नहीं करते. सो उनके एक बैच में बंदा आया, मतलब एक जूनियर था, मतलब दे वर इन द सेकंड ईयर एंड ही वाज इन द फर्स्ट ईयर. तो एक बंदा आया.
सो बात फैल गई कि यार ये जो एक राज नाम का बंदा था, वो यार मेडिटेशन बहुत करता है, और कहते हैं ना वो सिक्के पे आत्मा बुला लेता है। ही वाज लाइक, गॉसिप्स में फैल गई। तो फिर बंदे उसके पास जाने लगे कि यार अच्छा तू सिक्के पे आत्मा बुला लेता है, तो उसने कहा हाँ। तो सामने से मजाक उड़ा दिया बंदों ने उसका। वो बंदा ऑफेंस ले गया, बोला ठीक है, सैटरडे नाइट को आओ तुम मेरे रूम पर, तुमको दिखाता हूँ क्या होता है। सो ऑलमोस्ट क्या हो गया कि ये 5-7 बंदे पहुंच गए रूम पे, बोला हाँ भाई दिखाओ। देवर लाइक यार कुछ तो होता नहीं है। तो ये बात है 95 की, उन्होंने बताई थी। सो उन्होंने बात की कि बताओ। तो बंदा पूछता बताओ किसकी आत्मा बुलाऊं। सो आई थिंक राजीव गांधी assassination took place in 1991, so it wasn't long. So he said यार राजीव गांधी की आत्मा को बुला, we want to know something, like मतलब वो कुछ चीजें थी। So Hmm. he did something. He chanted some mantras and did some meditation. And वो जो सिक्का था वो घूमने लगा। Hmm. अब सिक्का घूमने लगा, थोड़ी देर में वो बंदा फोकस्ड हुआ, और थोड़ी देर में वो पैनिक करने लगा। बंदा जो राज था, वो थोड़ा उसके चेहरे पे टेंशन आ गई। तो सबने पूछा क्या हुआ। तो बोला यार ये कोई और ही बंदे की आत्मा आ गई है जो 1984 में जिसकी डेथ हुई है, बट अब ये Hmm. जाने का नाम नहीं ले रहा है। Hmm. तो सबने पूछा भाई बताओ फिर करना क्या। सब भी पैनिक हो गए। बोला एक काम करो, जोर जोर से गालियां दो। नाउ इमेजिन 5-6 guys in a room, तो Hmm. दे आर अब्यूजिंग एट अ नाइट, मतलब 11-1 बजे के आसपास। अब वो गालियां देने लगे जोर जोर से, तो आसपास हॉस्टल में फैल गया, या क्या हो गया, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। अच्छा Hmm. बच्चे इकट्ठे हो गए रूम के बाहर। इतने वार्डन भी अपना सिक्योरिटी लेके आ गए। लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। बाहर से बंदे खड़े होकर देख रहे हैं, और ये गाली दिए जा रहे हैं 5-7 बंदे खड़े होकर। हॉस्टल से बाहर, जो रूम के बाहर बंदे खड़े हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये इनमें से किसी का इंटरेस्ट नहीं, ये सारा फोकस इनका गालियां देने पर। सारे खड़े होकर देख रहे हैं ये Hmm. हो क्या रहा है। सबको लगा यार पागल वागल हो गए। तो 15-20 मिनट में सारे चले गए। एंड माई टीचर सेड कि वो बंदे जो है ऑलमोस्ट 40-45 मिनट तक कंटिन्यूअसली गालियां देते रहे। जब वो सिक्का घूमना रुका तो उनकी जान में जान आई। ये स्टोरी कहाँ से है? ये वसई से है कि दिल्ली से? नहीं नहीं, दिस इज फ्रॉम जेएनयू। दिस इज फ्रॉम जेएनयू। हाँ, मैं एक्चुअली माय because टीचर है दिस। when I was small, I heard this similar kind of story, but हाँ। instead of Rajiv Gandhi, it was Mahatma Gandhi. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इट वाज बेस्ड इन? वो उतना याद नहीं है, with like जब भी मैं छोटा था ना, someone was telling me the third fourth hand story. यही होता है ना, बस कैरेक्टर्स के नाम यही बदल होता जाते है। हैं। वो नेम हाँ, प्लेस थिंग बदल देते हैं, बाकी बस टेम्पलेट रिमेन्स द सेम। that is what, because see, the main thing why I started my journey on YouTube and on podcasting is basically to break the myth, to break the blind हम्म। faith. एग्जैक्टली। uh, because even I enjoy horror content to the core. I come from work, हम्म। watch some हम्म। videos related to horror, watch some movies, podcasts, this, that, and all, and that is how I searched Jay Alani. I got introduced to हाँ। him, हम्म। and his concept actually, I'm inspired by him. His concept is the हम्म। same thing. He's not telling ghost is there or not there. That is up हम्म। to you to decide. But what हम्म। he's telling is that the blind faith which is there between the हम्म। supernatural and the हम्म। reality, the blind faith, that is what he's trying to break. So I even had an interview with him on my channel, so it was really fun. आई मीन उनका जो एक द वे ऑफ नरेशन, द वे ही नरेट्स हिज स्टोरीज इज फिनोमिनल। आई मीन इट बाइंड्स यू। Hmm. इट कैन बाइंड यू टू, यू कैन, मतलब आप उनको आवर्स सुन सकते हो, वो कम पड़ हाँ. जाता है। Hmm. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, मतलब मैं बता रहा हूँ ये, इनफैक्ट ये मुझे याद है 2019 की बात है कि आई केम अक्रॉस द नेम ऑफ जय अलानी। द हब हब Hmm. हॉपर पे पॉडकास्ट आते थे। हाँ, 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 हाँ. तो आई वाज इन, आई यूज्ड टू स्टे इन मोहाली, चंडीगढ़ बैक देन। तो मैं अपने ऑफिस से आता था, और मेरे जो दो रूममेट्स थे वो दे वर स्टूडेंट्स, तो उनके समर वेकेशंस हो गए, दे वेंट होम। सो आई वाज द ओनली वन स्टेइंग इन अ 2 BHK फ्लैट। इट वाज अ बेसिकली फ्लोर, आई वाज द ओनली वन स्टेइंग। So I used to come from the office, have my dinner, and I used to play the podcast, and I used to hear it. मैंने मतलब इतना सुना कि एक एक पॉडकास्ट 15-15 20-20 बार सुन चुका हूँ उनका मैं। एवरी Hmm. सिंगल एपिसोड इतना सुना। तो Same, उसके same, बाद, same here. हाँ फिर उसके बाद आई केम अक्रॉस नील डिसिल्वा।
And what a writer Hmm. he is. I mean, what a writer he is. Even I Yeah, I had a beautiful. podcast. Yes, मैंने उनके साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया हुआ था अपने एक यूट्यूब चैनल के लिए, दैट आई Hmm. यूज्ड टू डू फॉर समवन एल्स. तो उसमें उन्होंने एक बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेना बताए थे कि इवन मतलब बड़े उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि आप जब इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो ये जो एंटिटीज हैं जिनको मतलब मे बी आप माने ना माने, दैट्स आवर चॉइस, हर बंदे की अपनी वो होती है, तो Hmm. this start getting attracted towards you once you get into all this. तो ये बड़ा Hmm. strongly feel होता है, but I'm still waiting for my experience to happen. Let's see when it comes. Don't call for it. Trust me, don't call for it. Let's hope. Once अच्छा it आपने, comes now, then it will yeah. never go. अच्छा, have you heard about Mr. Waqar Raj, who used to be in Indian Paranormal Society? He had headed paranormal society for almost 4 to 5 years after death of Mr. Gaurav Tiwari. नहीं यार, I'm hearing it for the first time. नहीं, एक बार आप उनका Waqar यूट्यूब Raj. चैनल देखो, पैरानॉर्मल एंड साइंस के नाम से है. आई थिंक ही हैज बहुत इंटरेस्टिंग वो फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं. तो आई थिंक यू मस्ट ट्राई टू कॉल हिम ऑन योर चैनल वंस. Yeah, actually, I know another guy, Sarbajit Monte. He हाँ, has ये फियर्स. collaborated with Neil De Silva for another book, The Spirits Talk to Me. यस 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 यस. So I have invited him, but उसका dates का issue है. So whenever he's free, then I will get आई him. थिंक I also आई थिंक यू. interviewed Neil De Silva also. No, he was the यस. first author on my channel. ओह. He's a very good person to talk to, and he will share या. good knowledge about horror. नो. और मतलब मिस्टर वकाराज, आई थिंक यू शुड चेक आउट हिज चैनल नेम इज पैरानॉर्मल एंड साइंस. So I think you can get a lot of content from his channel because he has made very interesting videos on various phenomena related to paranormal. Hmm. So I think you must try to Paranormal. get him on your channel and science. Let me check it out. I think he became famous when he tried communicating with that SSR death after he has a very Yeah, yeah, video. yeah. Hmm, So I hmm, think he hmm, has a hmm. very interesting take on those things. So I think वो उनकी communication videos वो डालते हैं अक्सर. सो आई थिंक उनके जो आप देखना इनके चैनल को काफी सारी वीडियोस है उसके ऊपर, बट आई फाइंड हिम वेरी इंटरेस्टिंग दिस गाय. Science. Let me check it out. And you have any ghost story to share, your personal experience or anything? या पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट एक स्टोरी है दैट वो भी मतलब किसी थर्ड पर्सन. एक्चुअली मेरा अभी एज आई सेड कि मतलब वो है कि मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है ऐसा कुछ. Hmm. हाँ, मेरा yeah. अभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो बट वही है मेरे पास एक स्टोरी और है, मैं सुनाता हूँ. दैट इज रिलेटेड टू गोवा, दैट इज इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली रिलेटेड टू गोवा. Hmm. एंड I am from ये जो, Goa, so yeah, I heard that. That's why I was asking about that Goa in that episode, and we were, Three but Kings yeah, we were Church. freaking church. I think that fascinates me, that Goa. That actually, that my interest in Goa came after I saw that 101 India Haunted series. Trust me, there are more haunted places in Goa as compared to the tourist places. To be very frank, and I coming from Goa, there Mm-hmm. are some stories Mm-hmm. which you'll feel that it is not true, but my mom, like my Mm-hmm. family people in Goa, they have experience and they have told me. But see, the main problem for me is, if someone tells me ghost story, I Mm-hmm. come to that level that, like if it is true or not true. Because now Mm-hmm. you told me the story about that uh, tossing the coin and Rajiv Mm-hmm. Gandhi and all. So this Mm-hmm. story is been spread out throughout India, because Mm-hmm. you also heard it, I also heard it, but in Yeah, different versions. So this is what happens. This is what is the blind faith. Like now, if someone is watching, they will listen to this story and then they will put their mix masala and then they will pass it on. But but the I truth think does not go. That's the main yes, thing. yes, exactly. But the entertainment quotient होता, that's very high in these stories. The kind of Hmm. thrill you get after hearing this story, that is phenomenal. In fact, we used to do a very peculiar thing when I was studying in Delhi. हम क्या करते थे कि दिल्ली में क्या होता है ना कि जो मतलब ह्यूमिडिटी बहुत होती है, जैसे मुंबई का है ना मौसम की ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो वी यूज टू डू अ थिंग कि जब हम
अपना डिनर विनर कर लेते थे हम हॉस्टल में के बंदे, तो हम क्या करते थे, एक पानी का टैंक बना था ऊपर। सो हम क्या करते थे सारे बंदे, वो जो बैम्बू वाली सीढ़ी होती है वो लेकर हम चढ़ जाते थे सारे बंदे उसके ऊपर। एंड अच्छा, उसमें एक हमारा एक मतलब अनडिक्लेयर्ड रूल था कि नो वन विल कैरी देयर फोन्स अलोंग विद देम, दे विल हैव टू लीव देयर फोन्स इन देयर रूम। The Okay. only thing would be carrying is would be cigarettes. That's what we used to carry. So we used to sit there after it used to begin around 10:30 11। तो हम बैठ जाते थे ऊपर। अच्छा, सीढ़ी क्या करते थे, हम खींच के अपने साथ रख लेते थे कि उठ के भागेगा नहीं कोई बीच में से। तो Hmm. ये हम ले लेते थे कि एक बार जो आ गया वो आ गया, और फिर वो जा नहीं सकता, जाएंगे तो सारे जाएंगे, आएंगे तो सारे एक साथ आएंगे। उसके बाद कोई एंट्री कोई एग्जिट नहीं। और फिर स्टोरी स्टार्ट होती थी वहां पर। अच्छा, सिगरेट भी एक जलती थी, एंड एवरी एवरी सिंगल गाय यूज्ड टू शेयर दैट सेम सिगरेट, सो दैट सिगरेट यूज्ड Hmm. टू गो अराउंड। उसमें जो स्टोरीज आती थी कमाल कमाल की। अच्छा, उसमें क्या हो ना, किसी को डर भी लग रहा है ना, तो वो भाग नहीं सकता, उठ के हाँ, बैठना भाग नहीं पड़ेगा। सकते हैं। वो सीढ़ी हमने रख ली, भाग नहीं सकता। तो जो थ्रिल आती Hmm. थी ना कई बंदों को, जिनको डर लगता था, पता कैसे चलता था कि दे यूज्ड टू ट्राई टू चेंज द टॉपिक, दे यूज्ड टू टेक इनटू Hmm. अदर डायरेक्शन। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी वहां पर कि एक बार मतलब किसी ने पूछा भी, मतलब हम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरा एक दोस्त एक दूसरे को बता रहे थे, दूसरे एक फ्रेंड को बता रहे थे कि यार हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो मुझे भी रियलाइज हुआ, उसने मुझे कहा कि यार तुम सिगरेट क्यों स्मोक करते हो, तो मुझे उस दिन पता लगा कि सिगरेट का फिनोमिना क्या था। तो उसने कहता है कि यार सिगरेट पीते हैं ना, तो फिर हमें अपने डर को भगाने के लिए। और उसका एक, कुछ भी। हाँ कुछ, एंड हियर्स टू वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना कि यार सिगरेट पीते हैं ना तो उसमें आग होती है, तो आग से भूत प्रेत पास में नहीं आते हैं आपके। कुछ भी। So he had a very interesting explanation to this ritual that we used to do back then. Crazy, crazy. Everyone has different stories. Even Ah, I don't know. I was in Naiga Vasai when I was studying, and mhm. back then, in the evening, lights used to go from Ah, 4 to 6, yeah, 7 to 8. what was So the year that when you time used to stay there? I was studying from year पता नहीं है, but from fourth grade, fourth standard Mhm. से लेके 10th standard. So मतलब was it in late 90s or early नहीं 2000s? early 2000, early 2000 में That came. I remember that. Yes, that load shedding, that 7 to 9 in the हाँ, evening light used to 7 go. to 9 and all. I And that remember time that time. TV internet कुछ था नहीं. हाँ, So where I was staying, it used to get completely dark. So we हाँ, used to go out, we used to this chit chat, and at the end, we used to start talking about ghost. हाँ. But the problem is, people talk about ghost, people watch content, but they should Mhm. understand that this is just for the thrill, this just for that Really, experience, yes, yes, yes. entertainment के लिए. But some people, they get so scared that it starts playing, with their mind. Because Yes. back then, this episode, this serial used to come Ahat on Sony, I think so. आहट, और एक आप बीती on DD National. Ha. So we used to, like, back then we used to not, everyone used to not have TV in the house. Only my Mhm. neighbor had TV, so we used to all go on top and we used to watch Ahat. Okay, and in Mhm. one of the episodes, the ghost was like the hand. It was they was just showing the hand like this, and they were making everyone scared in that Mhm. episode. So what happened is, like, we all guys were sitting, girls, guys, whatever, building ka jo bhi log hai, and then Mhm. suddenly my friend, he just put his hand from behind and he made one guy scared. He started crying. He peed his pants, and for 2 days he got high fever. And that is the Oh no. incident. After that, we never got to watch Ahat. So ये सब होता है. People should just enjoy for entertainment. It should not play in your head. I said, do you remember that serial कोई है on that Star हाँ, Plus? yeah, Star Plus. हाँ, that was also phenomenal. I mean, that was the horror content that was available at that point of time for all of us. Yeah. That was And that that was was quite. up. That was, and there was another Aap Beeti on DD National. ये इतना याद नहीं है, but I remember कोई है and Ahat. This was like the हाँ, main thing which main we thing. used to watch.
अच्छा, एक मतलब जस्ट एन आइडिया, यू शुड डू अ मतलब गोवा स्पेशल हॉरर सीरीज, बिकॉज गोवा की स्टोरीज बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं, आई डोंट नो व्हाई। हम्म। एंड आई थिंक जो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ वो भी गोवा से रिलेटेड ही है कि हाँ, ये चलो भी, आप हाँ सुनाओ। हाँ, ये भी है ना, ये भी एक्चुअली किसी ने सुनाई है। एक्चुअली ये मेरे फादर के एक फ्रेंड है, ही यूज्ड टू स्टे विद अस। सो मेरे फादर चूंकि के बैचमेट रहे हैं, वो साथ में उन्होंने पढ़ाई करी है। सो उन्होंने सुना है कि मतलब उनके सीनियर्स ने सुना हो, मतलब वही है कि वन मैन सेड टू द अनदर, इट्स थर्ड थर्ड हैंड फोर्थ हैंड काइंड ऑफ स्टोरी। तो हुआ क्या कि एक मेडिकल स्टूडेंट्स का ग्रुप था। सो दे वेंट टू गोवा ऑन अ कॉलेज ट्रिप। So that was a entire batch. So they stayed in a मतलब dormitory kind of arrangement. It wasn't a proper hotel, but that was a dormitory kind of arrangement. They all of them were staying. तो उनमें से क्या था ना, हर एक ग्रुप में दो चार ऐसे बंदे होते हैं जिनको एंथुसियाज्म होता है, दे आर ओवर एंथुसियास्टिक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो दे सॉ कि यार एक रूम है ना होटल का, वो बंद पड़ा है, वहां पे कोई जाता नहीं है। तो दे ट्राई टू आस्क द मैनेजर अबाउट दैट कि यार क्या है कि व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग पीपल, व्हाई डोंट यू अलाउ पीपल टू गो देयर। सो ही सेड नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ही ट्राई टू ब्रश देम ऑफ। तो जब उसने ब्रश ऑफ किया तो इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। तो फिर उन्होंने कोई जो वहां का कोई हाउसकीपर या कोई ऐसा कोई बंदा था, उससे पूछा कि यार क्या मसला है सारा। सो ही सेड कि यार यहाँ पे ना कुछ हॉरर वॉरर मतलब कुछ भूत वूत का ही वो है, इसीलिए इसको बंद किया हुआ है, पूजा वूजा करके बंद कर दिया है इसको। तो उनकी क्यूरियोसिटी जाग गई, बिकॉज दे वर मेडिकल स्टूडेंट्स, सो दे डिडंट यूज्ड टू बिलीव ऑन दीस थिंग्स। सो उन्होंने क्या करा कि उस जैसे वो कहीं से मतलब कुछ पैसे वैसे देकर कोई एक रिसेप्शनिस्ट था या डोंट नो किसको, वो चाबी की प्रिंट ले ली साबुन के ऊपर, और एक वो डुप्लीकेट चाबी बनवा के लिया, बिकॉज दे वर स्टेइंग फॉर गुड 10-12 days इन दैट डॉर्मेट्री। सो क्या हुआ कि उन्होंने चाबी की प्रिंट ले ली, और सब जब सो गए, रात को आए, मतलब सब लोग खाना वाना खा के सो गए, और जब एकदम डेड साइलेंस हो गया, तो दे डिसाइडेड टू अनलॉक दैट रूम। तो उसमें से क्या होता है कि दो बंदे जो थे वो बड़े आ गए, और उन्होंने जाके खोला रूम को। तो उस रूम को खोलते ही उनको मतलब क्या हुआ कि दिखा कि एक बेड पर ना एक स्केलेटन पड़ा हुआ है, कंकाल पड़ा हुआ है। एंड स्केलेटन, तो उनको लगा कि मतलब उनको थोड़ा सा रजिस्टर करने में क्या होता है ना, जब हम कोई ऐसी चीजें देखते हैं, जैसे अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे होते हैं कि वहां पे भूत नहीं है, और ऐसा कुछ दिख जाए, तो हम थोड़ा 1-2-3 मिनट हमको लगता है रजिस्टर करने में। तो अभी रजिस्टर कर ही रहे थे, देन दे सॉ दैट स्केलेटन मूविंग, थोड़ा सा एक मूवमेंट हुई स्केलेटन में। और उसमें क्या हो गया कि एक बंदा जो था उसमें, वो तुरंत उसको इतना शॉक रहा है कि ही डाइड ऑफ हार्ट फेलियर ऑन द स्पॉट। एंड अदर वन रैन अवे, और वो बेहोश हो गया आकर लॉबी में, दौड़ के लॉबी में आया, बेहोश हो गया। तो जब वो चिल्लाया, इन्होंने चीखने चिल्लाने की आवाज आई, तो शोर मच गया। तो फिर देन बहुत जल्दी जल्दी इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो एक पर्सन उनमें से बचा नहीं, और अदर वन वो उसको थोड़ा टाइम लगा है, 1.5-2 महीने में, मतलब कुछ टाइम लगा उसको ठीक होने में। तो जब उसने ठीक हुआ तो ये सारी स्टोरी बताई, और ऑन द हैंड साइड फिर मैनेजर से भी ने भी वही सेम बात बताई थी कि वहां पर एक्चुअली हुआ क्या था कि मर्डर हुआ था उस रूम के अंदर। तो उस रूम में से कहते हैं कि जब हम बॉडी को हटाने की कोशिश करते थे, तो peculiar things used to happen। तो फिर हमने वो छोड़ दिया, हटाई नहीं बॉडी उसको। सो आई मीन थोड़ा मुझे भी ऑब्नॉक्सियस लगती है स्टोरी, बट दैट्स अ स्टोरी आई हैव, बिकॉज कि आप बॉडी नहीं हटाना है, आई थिंक ये थोड़ा ऑब्नॉक्सियस लगा मुझे पार्ट स्टोरी के अंदर। बट दिस वाज द स्टोरी दैट वाज टोल्ड टू मी बाय वन ऑफ माय फादर्स बैचमेट, एंड इट हैपेंड इन गोवा। Which part of Goa this was? Like which the hotel? Any आई idea? थिंक इट मस्ट बी अराउंड एग्जैक्टली, बहुत मुझे भी पता नहीं। एक्चुअली गोवा भी मैं ज्यादा गया नहीं हूँ, 1-2 बार ही गया हूँ। तो बस मैं पणजी के आसपास के एरिया को ही थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है। तो मे बी उसके आसपास ही रहा होगा जो कोई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आई थिंक ये Hmm. मुझे स्टोरी सुनाई थी व्हेन आई वाज 7-8 years old। Ah, okay. तो उतना फिर थोड़ा याद भी नहीं है, बिकॉज उसके बाद क्या हो गया कि घर में चूंकि क्या है कि इन चीजों को उतना मतलब उतना कोई बातें नहीं करता। तो जब भी हम बात करते हैं, तो पेरेंट्स यूज टू ब्रश मी ऑफ कि यार क्या बकवास बातें, Hmm. focus on things that are good, don't focus on negative things। But quite creepy the story. I like any story which has an unexplained ending.
लाइक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन द इंटरेस्ट, द मिस्ट्री इज मोर फॉर मी। इट्स अ गुड स्टोरी। अच्छा अच्छा है। अच्छा, हैव यू रेड अ बुक दैट वर्ल्ड फेमस घोस्ट स्टोरीज, अ बुक? उसमें ना व्हाइट हाउस की स्टोरीज दी हुई है कि व्हाइट हाउस में फिर वो अब्राहम लिंकन की जो आत्मा भटकती है उसकी स्टोरीज दी है। हैव यू रेड दैट बुक? नहीं नहीं नहीं, आई हैव बड़ी नॉट रेड। इंटरेस्टिंग एक बुक थी। उसके अंदर उसमें क्या है ना कि वर्ल्ड फेमस घोस्ट स्टोरीज हैं, तो जिसमें से मैं बता रहा था कि ये पिक्चर आपको जो 1930 वाली वो लेडी की पिक्चर थी, उस बुक में देखी थी मैंने। सो दैट हम्म दिस बुक आई रेड इन 2006-7 व्हेन आई वाज इन 5th और 6th ग्रेड। तो हम्म उस बुक में ना मतलब एक स्टोरी दी हुई थी एक रेशमा शेरा की। रेशमा शेरा मूवी है ना, ये संजय दत्त के फादर से सुनील दत्त। हम्म उसमें उनका एक एक्सपीरियंस था कि होता क्या था कि फिल्म की जो रेशमा शेरा की जो शूटिंग हो रही थी वो डेजर्ट एरिया में हो रही थी, राजस्थान में। तो वहां पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो जो स्टार कास्ट थी उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था पानी का। एक एक वेसल के अंदर था। तो हम्म होता क्या था कि जब ये शूट करने जाते थे तो वहां पे रेत की आंधी चलने लगती थी और शूटिंग करना मुश्किल हो जाता था। तो 2-3 दिन ऐसा हुआ कि इनको शूट 5-10 मिनट आधे घंटे शूट हुआ, फिर रेत की आंधी की वजह से शूट इनको पोस्टपोन करना पड़ता था। तो एक दिन क्या हो गया कि जब ये शूट स्टार्ट हुआ, रेत की फिर आंधी आने लगी, तो शूटिंग रुक गई। तो ये सब लोग एक जगह बैठे हुए थे, तो ये जो संजय दत्त के फादर हैं सुनील दत्त, इन्होंने देखा कि जहां पर जिस बर्तन में पानी रखा हुआ था उसके ऊपर एक कोई शेडो सी तैर रही है, हम्म कोई शैडो जैसी चीज तैर रही है। तो वो बड़े इंट्रिग्ड हुए कि ये क्या है। तो वो मतलब जैसे था ना कि कि वो अंदर जाने की कोशिश कर रही हो शैडो कोई उस वेसल के अंदर, बट उस पे कैप लगा था वो वेसल के ऊपर, तो वो अंदर नहीं जा पा रही थी। तो पता नहीं इनको क्या लगा, इन्होंने जाकर वो वेसल के ऊपर से वो कैप हटा दिया और थोड़ी देर में अचानक ना सारा पानी खत्म हो गया उस घड़े के अंदर से। हम्म वो पानी खत्म हुआ और पानी खत्म होने के 10-15-20 मिनट बाद अचानक से जो है ना वो रेत की आंधी रुक गई एंड थिंग्स वेंट स्मूथ आफ्टर दैट। और उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर वो रेत की आंधी आई उसके बाद कभी। ओह शिट। और एक स्टोरी था, आई डोंट रिमेम्बर ये किसने सुनाया था कि एक एक बंदा था मुंबई के, आई थिंक कैसे आर्थर रोड जेल का, कि एक बंदा था हम्म उसमें क्या हुआ था ना कि पुलिस वाले को अपने मतलब पुलिस वालों को पता, एक बॉडी डिस्कवर की एक मिल के अंदर से। और जिस बंदे ने बताया था ना कि इस मिल के इस पाइपलाइन में एक बॉडी पड़ी है, वो वही पर्सन था जिसकी बॉडी मिली वहां पर। अरे रे रे माँ। शिट। दैट इज इन मुंबई। एक्चुअली क्या होता है कि एक बंद एक्चुअली दैट वाज लव ट्रायंगल काइंड ऑफ थिंग, कि एक पर्सन था, हम्म उसकी वाइफ पर एक तीसरे बंदे का वो दिल आ गया था। सो दे फेल्ट कि जब तक हम इसको मारेंगे नहीं, वी कांट मैरी, आई हम्म कांट मैरी टू दिस विमेन। सो उसने क्या करा कि वो जो बंदा था उसने उसको एक दिन ड्रिंक पे इनवाइट किया एंड व्हेन ही गॉट हेवीली ड्रंक ही स्टैब्ड हिम। और वो जो जैस्मिन मिल्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे काफी उसी बुक में मैंने स्टोरी पढ़ी थी, वो जैस्मिन मिल्स में डाल दिया। हम्म तो कई दिन बाद क्या होता है कि पुलिस थाने में एक बंदा बैठा हुआ था। एक वो जब पुलिस इंस्पेक्टर आया उसने देखा कि पुलिस स्टेशन में एक बंदा बैठा हुआ था, वो बंदे को कोई रजिस्टर नोटिस नहीं ले रहा था। जैसे क्या होता है ना कि पुलिस स्टेशन में जब आप एंटर करते हो तो कोई ना कोई पूछता है आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या हम्म काम है। तो हम्म ही गॉट शॉक कि यार सब बंदों को नोटिस ले रहे हैं, इस बंदे का कोई क्यों नोटिस नहीं ले रहा। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर उसके पास गया एंड ही सेड कि "हाँ, बताइए सर क्या काम है, आप क्यों आए हो यहाँ पर"। तो वो कहता है कि यहाँ पर ना एक मिल है, उसकी इस पाइपलाइन में एक बॉडी पड़ी हुई है, आप वो रिकवर करो जाकर। तो जिस तरीके से हम्म उस पर्सन ने डिटेल्स बताई ना, द पुलिस इंस्पेक्टर गॉट शॉक। तो बोला हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है, और जब आपको पता है तो फिर मतलब आपने क्यों नहीं वो करा। तो कहता है कि वो ना बॉडी मेरी है। शिट। ओह शिट। शिट। ये एंड व्हेन कब ही का रिकवर, कहानी है? दिस इज लेटेस्ट स्टोरी कि हो गया नो अभी नो सब? ये आई थिंक 70s 80s की बात है। एंड पुलिस इंस्पेक्टर नेम वाज मिस्टर अरुण खोट। बहुत पहले मैंने उसी बुक में स्टोरी पढ़ी थी। मिस्टर अरुण खोट वाज द नेम ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर हु ये बुक का नाम इन्वेस्टिगेटेड क्या है? वर्ल्ड फेमस घोस्ट स्टोरीज। ओह ओके। दिस शिट। वाज पब्लिकेशन, पब्लिशर इज पुस्तक महल, पुस्तक महल इज द पब्लिशर। सो आई थिंक हु इज you must go through this book, it has very interesting stories.
crazy. आई थिंक उसमें Quite एक scary एक्सपीरियंस as बड़ा well. अच्छा दिया। हाँ, उसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी दी है। एक विंस्टन चर्चिल ने मतलब कहते हैं कि इन्होंने अब्राहम लिंकन का घोस्ट देखा था। Hmm. तो उसमें मतलब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट उसमें क्या है ना कि एक्चुअली होता क्या है कि आपको पता है कि जैसे आई थिंक 1860s में किसी टाइम पर अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन हो गया था व्हेन ही वाज वाचिंग अ प्ले बाय Hmm. अ पर्सन नेम्ड जॉन विल्कस बूथ। Hmm. सो उसके कुछ टाइम बाद क्या होता था ना कि जो उनका बॉडीगार्ड हुआ करता था मिस्टर लिंकन का, अक्सर ना उसको मिस्टर लिंकन दिखते थे। Hmm. तो इतनी बार दिखे कि ही बिकेम मेंटली डिस्टर्ब एंड ही ट्राइड, ही रीच्ड अ प्रीस्ट हु Oh shit. इंट हाँ, फिर उन्होंने कम्युनिकेट करा इनकी स्पिरिट से मिस्टर लिंकन की। तो उसमें पता है चला कि वो अच्छा जब भी वो मिस्टर लिंकन आते थे ना तो उसके सामने बॉडीगार्ड के, तो उनके एक्सप्रेशंस ना बड़े वो नाराजगी वाले होते थे कि ही इज एज इफ ही हैज डन समथिंग रॉन्ग। Hmm. तो वो इतना डर गया, तो उनसे जब कम्युनिकेट करा मिस्टर लिंकन की जो स्पिरिट थी कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, तो उसमें ये पता चला कि मिस्टर लिंकन को ये लगता था कि अगर मेरा बॉडीगार्ड थोड़ा अलर्ट रहता उस दिन तो मेरा मर्डर नहीं होता। तो फिर कहते हैं कि मतलब उस बुक में ही ऐसे लिखा है कि उसने बॉडीगार्ड ने फिर माफी मांगी Hmm. और ये प्रॉमिस किया कि मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि मेरी लापरवाही से आगे किसी की जान नहीं जाएगी। Hmm. But who had killed तो him? दैट वाज अ गाय कॉल्ड जॉन विल्कस बूथ। I think that was due to that. I don't remember that civil war. After civil war, he was assassinated after the civil war. So I don't know, but I'm not sure. But I think this was his assassination was somewhere related to the civil war that happened in America during that era. So you So have been reading a lot of horror books, I believe. yeah, सी बिकॉज क्या होता है ना कि जब एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि अगर आपको मना करें कि यार, मेरी एक टेंडेंसी है कि अगर मुझे कोई मना करे ना कि यार वहां नहीं जाना, तो मेरे माइंड Hmm. में आता है यार देखते हैं, चल के देखते हैं है क्या सही एक बार। सो दैट्स व्हाट Correct. ड्रू मी Reverse टुवर्ड्स हॉरर। psychology. हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी। तो मुझे हॉरर की तरफ इसी चीज ने खींचा, बिकॉज सब मना करते थे यार कुछ नहीं है, बकवास है ये वो। सो मुझे लगता था Hmm. यार क्या ऐसा क्या है कि लोग मना कर रहे हैं इसके बारे में, यार देखते तो सही एक बार है क्या। कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग को मजा आता है, ट्रस्ट मी, मेरे को तो हाँ, बहुत मजा आता बिल्कुल। है। डर लगता है, सबको लगता है हाँ, डर, बट हाँ। मजा नहीं, आता है बिल्कुल, मेरे को। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप ये बुक में से बहुत सारी स्टोरीज हैं और उसमें मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की स्टोरीज हैं। एक आधी स्टोरी तो ऐसी भी है कि एक पर्सन था, उसको वो घर में अक्सर ना एक रूम घर में दिखा करता था। मतलब जैसे एक घर, एक फैमिली ने घर खरीदा किसी से, तो उसमें एक बूढ़ा आदमी दिखता था एक बाथटब में, पर्सन एक। हम्म। तो सब मतलब फैमिली में फिर डिस्टरबेंस हो गया सारा का सारा कि यार ये यहाँ पे पर्सन की स्पिरिट है ये वो। सो देन दे वेंट बैक टू अ प्रीस्ट। तो जब उसने कम्युनिकेट किया तो पता चला कि जो पर्सन उनको दिख रहा है उसको खुद ये रजिस्टर नहीं हुआ था कि ही हैज डाइड। उसको पता ही ओ। नहीं था उस टाइम। और हम्म। एक्चुअली उसको ना बाथ टब वो बहुत पसंद था। तो बात तो करेक्ट। while he was having his bath, he he died due to heart failure while he was having bath. So वो उस जगह को नहीं छोड़ रहा था। हम्म। देयर तो इज फिर अ बाद series यस। on Netflix. It's called as Unsolved Mystery, हाँ, or हाँ। episode 6 or 7, where they are showing about the Japan tsunami. So a lot हम्म, of people died, and उसके बाद हम्म, मतलब 4-5 साल होने के हम्म, बाद there was हम्म, a female who was just cooking something at home in the evening, and suddenly हम्म, she hears someone knocking, and then when she हम्म, opens it, she हम्म, sees one female fully wet, and she's asking for हाँ, help. So the lady हम्म, who's cooking, she gives her fresh clothes, and she says, okay, you can change and you can go. So हम्म, this lady gives the clothes and she goes back in the kitchen. And then हम्म, suddenly, after some time, she looks outside in the main हम्म, door. She can see hundreds of people standing outside. So what तेरे। exactly it is? These people are drowned, but they don't know that they're dead. ओ So नो। this is that was quite scary. So there's a book also. There's a book. So basically, that book is converted into like a documentary kind of series on Netflix. You should watch that. ब्रदर, हैव यू heard that podcast I recently, the new paranormal of Red FM? It's on हाँ, गाना हाँ, डॉट कॉम। मैं सुना। वो सरबजीत मोंदे का एपिसोड सुना था।
हाँ सर जी, तो उसमें एक स्टोरी है एक पर्सन का कि मतलब उसमें कहते हैं ना कि एक ही वाज अ ओल्ड मैन और उसको आई थिंक बहुत से हेल्थ इश्यूज थे। तो उसकी डेथ हो गई उस पर्सन की। हम्म। और जब डेथ हो गई ना तो वो बताता है कि फिर वो हो गया ना कि डेथ हो गई तो उसको फिर उन्होंने मतलब अंतिम संस्कार के लिए वो जो रिचुअल्स थे वो कर रहे थे एंड दे वर अबाउट टू टेक हिम फॉर द क्रेमेशन एंड दैट्स व्हेन ही मूव, मतलब उसके हाथ पैर चलने लगे, सो एवरीवन गॉट स्कैर्ड हम्म। कि ओ नो इट्स अ घोस्ट, बट आई थिंक वो पर्सन ही वाजंट डेड, मतलब उसमें जान आ गई। हाँ। एंड बाद में फिर लोगों ने रेस्टर किया नहीं नहीं ये भूत नहीं है, ये जिंदा है पर्सन। हम्म। तो जैसे इसमें फिर बाद में उस पर्सन ने बताया कि जब मैं डेथ हो गई मेरी, तो मुझे एक हम्म। पर्सन आया, मतलब एक वो कहते हैं ना कि ये गॉडली फिगर था, वो मुझे अपने साथ ले गए। तो जब ऊपर हम्म। गए तो पता चला कि नहीं ये थोड़ा अभी इसका टाइम है जाने का, सब। मतलब इसका है कि हाँ अभी तुम्हारा टाइम है। जैसे ही सेड कि जब मैं ऊपर गया तो मुझे फिर बताया गया कि नहीं अभी तुम्हारी लाइफ है। तो ही सेड नहीं यार मुझे वापस नहीं जाना बिकॉज बॉडी में मेरे बहुत से इश्यूज हैं, मुझे अरे अब रे रे। पसंद नहीं आ रहा है, तो मतलब मेरे लिए आई थिंक डेथ ही ठीक है। तो ही सेड नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको कुछ कहते हैं कि जो एंजल था या गॉड वट एवर यू मे कॉल, उसने हम्म। कुछ ब्लेसिंग्स दी एंड आफ्टर दिस उसका जो हेल्थ इश्यूज थे अपने आप धीरे धीरे ठीक होते गए। एंड आफ्टर दिस ही लिव गुड 20-22 years ओ। बिफोर ही सो पास्ड अवे। तो उसका टाइम आया था उसके बाद। हाँ सबका काइंड ऑफ टाइम से कि आएगा। हम सबका टाइम आएगा। सो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई। हाँ उसमें ना जो आप कह रहे हो द न्यू पैरानॉर्मल, उसके अंदर वकार राज का भी एक एपिसोड है, तो यू मस्ट आल्सो हियर दैट। नहीं, मैंने सिर्फ एक एपिसोड सुना था। आई हैव नॉट हाँ हर्ड दूसरा। बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग कलेक्शन बनाया उन्होंने भी पूरा का पूरा, हम्म। जो अलग अलग But डोमेन्स के लोग हैं। talking about books, you are reading या all Western books and all. What about the Indian books? Have you read any Indian horror books? इंडियन हॉरर बुक में मैंने एक ये मैंने इनका पढ़ा है, नील डिसिल्वा का मैंने पढ़ा है सिर्फ अभी तक। See, Neil De Silva, see, also my other motive to start this channel is to हम्म promote the Indian horror authors. To be very frank, हम्म, सब लोग जाके वेस्ट में हॉरर कंटेंट कंज्यूम करते, हाँ बट in India, there are हम्म so much of variety of stories, especially हम्म books, podcasts, हम्म YouTube channels. They are not growing. But if you go या in West, everyone is checking out the West ka horror stories. But India ka story कौन सुनता है? So that is another motive for me where I like to promote Indian horror authors, and I have interviewed couple of horror authors on my channel, and I just talk about the books. I even narrated some books, on my channel. I've created episodes. So there is one book called as Possessed, which is written by Abhishek Kumar Singh, and there हाँ are हाँ ten short stories. Okay, try it out. The हाँ last आई थिंक story, which आई is सॉ यस प्लीज प्लीज गो अहेड। the last story, I have also narrated. I just narrated little bit of that, हम्म and you should hear that. And trust me, after hearing that, you will 100% buy the book, because the last story is interesting. I'll give you my personal experience. So now I am staying here, and then I have a small balcony. So sometime, in the house, I don't have that proper mindset. So I go in the balcony, I put a dim light, and I start reading the book. So one evening, I started reading the book, and it was hardly 8:39. You know, started reading, and I finished the chapter. I'm reading, कुछ है ही नहीं, horror कुछ है ही नहीं, just the story is just going on, going on, going on, going on. But at the end of the chapter, the last line, when I read, ऐसा गांड फट गया ना, I'm telling you, I just closed the book. I kept the book there only, straight I came inside, and I put all the lights on. The stories from Indian horror books, authors, I mean, are really, really amazing. Even if आई people who are watching, you should try and check out the books, from India. They are really nice. एक मैंने आपका एपिसोड और देखा था, दैट बुक दैट यू डिड ऑन द बुक दैट 10 कमांडमेंट्स ऑफ डेविल और इविल, हाँ, 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 डेविल, हाँ, वो लेटेस्ट एपिसोड है वो. लेटेस्ट That I एपिसोड है वो मैंने देखा था, मतलब एपिसोड वाला मतलब। So I do a mixture, a combination of everything related to horror. Sometimes I just have a conversation with the author. Sometimes I narrate their book. I make it into an episode where I add background music.
then some sound effects and also. And the best part is that author Mr. Abhishek Kumar Singh, he even replied to me on that episode, and he really really loved it because he actually could see his book coming you know in हाँ, reality. in reality. But anyways, I'm doing Exactly. too much self promotion here. No, So no, no. No, I mean you deserve lot of uh, viewers because I think आपका जो एक way of narration है and the hmm. way you are passionate towards horror, I think you deserve millions of subscribers and I millions of hope so. I hope so. People who have not liked the stream right now, please like the stream first. And if you haven't subscribed, please subscribe. I'm very close to hit the 1000 1000. milestone, which is the difficult one, they say on YouTube. But if you want to enjoy such content, please like the video, like the stream. And Sure. No, yeah. I have been telling my friends about you the Hmm. ever since I have discovered your channel because I like your narration, the passion you have towards horror Hmm. makes you different. बिकॉज क्या होता है ना कि अभी ये मतलब जो हॉरर उसमें देखते हैं दो तीन चैनल से होजे है आई थिंक ही इज रिसीविंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑन हिज चैनल ever Correct. since he has been doing that horror Hmm. live but as you say ना इंशाल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह हो जाएगा, हो हाँ, जाएगा. जाएगा बढ़िया But बट आपका जो I have a question. Now, हम्म, there is another friend of mine. His name is Swapnil. He has his channel called as Abirbhav Horror Stories. आविर्भाव यस यस Yeah. So I got introduced to him through social media only. Then he came on my channel, and now we chat, we exchange ideas, and all. It is good. But the plus point for him, what I feel, it's not competition, but it's the language because मेरा हिंदी बेकार है, trust me. So I cannot narrate in Hindi. I cannot speak fluent in Hindi. So you being a person from India who likes to enjoy content in Hindi and English, what would you prefer if you are searching for something? What would you prefer? Would you prefer Hindi only, or would you prefer English, or would you prefer both? See, एक चीज है मैं मतलब आई वुड लाइक टू कन्फेस वेरी ऑनेस्टली कि Hmm. इंग्लिश तब तक ही मैं बोलना पसंद करता हूँ जब तक कि बहुत कंपलसरी हो अनलेस आई एम इन ऑफिस Correct, अदरवाइज correct, क्या correct. होता है ना देर इज आपको एक होता है ना कि जैसे आप बता रहे गोवा से आते हैं तो आई थिंक कोंकणी आपकी लैंग्वेज है Hmm. यू आर वेल वर्स विद दैट लैंग्वेज सो आई थिंक यूर आई डोंट नो मतलब बट मैं अपना बताता हूँ कि जो मेरी थिंकिंग होती है दैट थिंकिंग पार्ट इज इन हिंदी Hmm. सो आई थिंक इन हिंदी आई ट्रांसलेट दैट आइडिया एंड स्पीक इन इंग्लिश तो मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो हिंदी में होता है तो दैट्स व्हाई Hmm. आई फील हिंदी क्वाइट क्लोजर टू मी Hmm. जैसे आपका That is कोंकणी what. रहेगा मराठी रहेगा तो हमारा क्या होता है ना हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज में होता है आई डोंट नो Hmm. अबाउट अदर्स बट ये जो मतलब दो तीन लोगों से मैंने और भी पूछा तो उन्होंने कहा कि यस जैसे इफ समवन इज पंजाबी सो दैट ही थिंक्स इन पंजाबी एंड देन Hmm. ट्रांसलेट दैट थिंग इनटू हिंदी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज एंड देन स्पेल्स इट आउट सो बट मेरे लिए ऐसा क्या है कि चूंकि आई एम हिंदी में ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बट ठीक ठाक एक एवरेज काइंड ऑफ कमांड है तो आई कैन कंज्यूम एनी कंटेंट दैट कम्स in front of me Hmm. doesn't Hmm. matter whether it's in Hindi or English. Yeah, so it should not matter, like, because the thing हाँ, is, now bachpan se I'm just हम्म, talking in English, speaking in English, I हाँ, mean. हम्म, But then I have a couple of friends, and then they speak in Hindi. I can हम्म, understand Hindi, but I just wanted to know a point of view from the viewers, like what they prefer. Because if I I think start talking in Hindi, ना सब लोग unsubscribe करके जाएंगे, वो तो sure है. नहीं नहीं देखो मेरा मतलब बेसिकली मैं हिंदी का मतलब इतना वो क्यों है बिकॉज इंडिया में आप देखो तो कम से कम ऐसा 40-50% पॉपुलेशन रहेगा जिसका प्राइमरी हिंदी. लैंग्वेज हिंदी है और हम्म. बाकी जो लोग हैं वो सेकेंडरी देखिए एक चीज कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है एक व्हेन एक पर्सन ऑफ हु इज फ्रॉम पंजाब एंड हु इज फ्रॉम उड़ीसा उनके बीच में हम्म. एक कॉमन थ्रेड क्या है हिंदी हम्म. इज द कॉमन थिंग दैट बाइंड्स देम जिसमें कम्युनिकेशन हो सकता है
तो आई थिंक हिंदी की एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी इसलिए ज्यादा है। और बाकी एक चीज और भी हुआ है कि जैसे अभी नेट बहुत एक्सेसिबल हो गया है, बहुत ही डेटा सस्ता हो गया है इंडिया में, तो जो हम्म, स्मार्टफोन है अभी गांवों में पहुंच चुका है। स्मार्टफोन सही इंटरनेट है। इज नो लॉन्गर अ फिनोमिना ऑफ मेट्रो सिटीज। अब वो हम्म, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज और गांव में भी पहुंच चुका है। तो जो हम्म, हम कंटेंट हम डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन जगहों पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पहुंच रहा है। तो एक गांव का बंदा जो उतना इंग्लिश के साथ उतना फेमिलियर नहीं है, तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा ज्यादा वो रहता है। बट आई हम्म, थिंक कि एक बार जैसे अब मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसा फाउंडेशन नहीं है, आई लाइक वो। और बाकी इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि मिस्टर स्वप्निल के चैनल को भी मैंने आपके थ्रू ही जाना। बिफोर हम्म, दैट आई डिडंट न्यू मिस्टर स्वप्निल। आई हम्म, डिस्कवर्ड मिस्टर स्वप्निल चैनल आविर्भाव हम्म, बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज उनको ओह, उन्होंने जो नोएडा हॉन्टेड मॉल वाली स्टोरी उन्होंने सुनाई थी, हम्म, तो वो जब मैंने देखी तो आई डिस्कवर्ड हिम एंड नाउ आई थिंक आई हैव बिकम हिज रेगुलर व्यूअर। yeah, yeah. Even I also watch when he's live. मैं भी और आता हूँ कभी कभी. नहीं, ऐसे आपने एक दिन बताया ना कि आप वसई से हो एंड नायगांव एरिया, आई थिंक स्ट्रक मी वेरी हार्ड, बिकेम नॉस्टैल्जिक फॉर मी। मैंने कहा यार मुझे अपना बचपन याद आ गया सारा। जैसे आपने कहा ना कि वो पावर कट होता था 7 से 9 के हम्म, टाइम में। सो आई आई कैन रिमेम्बर ऑल दैट कि हम क्रिकेट तब तक खेलते जब तक बॉल दिखनी बंद नहीं हो जाती थी लास्ट तक एकदम। हम्म, वो क्रिकेट खेल रहे हैं अपना, फिर वहीं पर बैठ गए वहां पर डिस्कशन चल रही है। बिकॉज मेरा क्या है ना कि मेरे पास क्या हॉरर कंटेंट होता था, तो आई यूज्ड टू नरेट स्टोरीज। आई हैव बीन, एक होता है ना ग्रुप में एक बंदा होता है हु हैज लॉट ऑफ हम्म, स्टोरीज टू टेल। सो हम्म. बेसिकली आई हैव ऑलवेज बीन दैट गाय हु हैज लॉट ऑफ स्टोरीज। क्योंकि That's जो good. कहीं और जो बड़े लोगों से सुनता था और अपने साथ वालों को आके सुनाता था। हम्म, सो वहां से मतलब क्या हो गया ना कि हॉरर का कंटेंट, जैसे फिर क्या मैं करता था कि बुक्स वो पढ़ रहा था। मेरे फादर को एक्चुअली मतलब फादर से मैं छुप के पढ़ता था, बिकॉज आई नो कि इफ ही डिस्कवर्स ही विल थ्रो मी अलोंग विद द बुक, हम्म, थ्रो आउट ऑफ द हाउस। सो बहुत छुप छुप के पढ़ता था। लेकिन बट जब मैं कॉलेज में आया तो फिर यहाँ पे थोड़ा फ्री हो गया मैं, मतलब स्कूल से जब निकल के कॉलेज में आ गया तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो वहां में थोड़ा फ्री हो गया। देन आई गॉट फेमिलियर विद लॉट ऑफ पीपल who have been हम्म, associated with Indian Paranormal Society. They have done workshops with them. So I हम्म, started learning the phenomena of paranormal through them. Because फिर उसके बाद क्या है ना कि जो डर था ना पहले, एक जो हल्का सा कहीं ना कहीं वो फिर खत्म हो गया, कि वो हम्म. फिनोमिना समझ में आने लगा। तो और बट वो थ्रिल है ना कि वो थ्रिल जैसा आई सेड कि like people have sweet tooth, I have a horror tooth. Because I need some horror content after dinner Hmm. before I go to bed. That is nice. And to be very frank, we have spoken for almost 40-45 minutes. Can you Okay. imagine that? हाँ हाँ। इतना इतना नहीं बात उस किया. बट अच्छा है. हाँ, नहीं बिल्कुल। मतलब आई थिंक उस दिन जब मैं था उसमें, मैं एक्चुअली आई वाज वर्किंग, मैं ऑफिस। सो उतना क्या था हम्म, कि थोड़ा हमारा क्या है ना, मार्च का टाइम है तो उसमें सेल्स वगैरह का थोड़ा प्रेशर रहता है इस टाइम पे ज्यादा। हम्म. बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है तो थोड़ा प्रेशर वाला टाइम है। तो बट आई थिंक टुडे आई वाज क्वाइट इन अ रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड, और आपने टाइमिंग भी बहुत सही सिलेक्ट कर लिया। तो मैं उसमें एक्चुअली कंफ्यूज था. सैटरडे, आई मीन संडे को रखूं कि ट्यूसडे को रखूं. बट ट्यूसडे मैंने संडे आई पोल थिंक। किया था. संडे, हाँ, एवरीवन वोटेड फॉर संडे. हार्डली few people voted for Tuesday. नो आई वाज द वन, आई वाज द ओनली वन हु वोटेड फॉर फ्राइडे और सैटरडे। Yeah, I know. आई वाज द ओनली एक्चुअली गाय। फ्राइडे को मेरे को एक दिन मिलता है हाँ ब्रेक. हाँ। फिर सैटरडे को तो होजे का पॉडकास्ट है. तो ओके। ही इज अ बिग फिश, सो यू कांट डू हाँ, एनीथिंग. नो नो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो नहीं नहीं, फिर संडे, संडे सही रहेगा। संडे एक्चुअली समटाइम्स स्वप्निल ही कीप्स on Clubhouse, the हम्म। horror live or whatever that is called, ghost story हम्म, session, what on Clubhouse. हाँ। तो आई वाज जस्ट चेकिंग which day is free. So Tuesday को free था, एक slot था. हम्म, तो but still now I'll keep on Sunday, but I'll keep little bit early, 9:30 or हाँ। something. बिकॉज ये थोड़ा क्या होता है ना कि जैसे वीकडेज पर क्या होता है ना, माइंड थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता है काफी सारी चीजों Hmm. से। Hmm. आज थोड़ा माइंड कहता है संडे को आप लेट उठते हो, आपका शेड्यूल थोड़ा रिलैक्स रहता है, कोई ऐसा वर्कलोड होता नहीं, तो आई थिंक यू इन रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड। Hmm. अदरवाइज सही अगर है. ये वीकडे होता तो आई वुड हैव बीन इन पैनिक। बिकॉज वंस यू गेट इनटू द जॉब, हम्म. वो 8 माइंडसेट hours अलग रहता है ना वो. mindset अलग रहता है। 8 hours sleep and a good food becomes a luxury.
बेटा स्लीप बिकम्स अ लग्जरी वंस यू गेट इनटू जॉब, सो वही चीज हो हम्म, जाता है। बट आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। आई थिंक बहुत मतलब हो सकता है मे बी आपको बिलीव ना हो, बट आई हैव बीन फॉलोइंग ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ योर्स सिंस आई हैव अरे डिस्कवर्ड योर चैनल, हम्म, अच्छा है। because because somehow I feel that Vasai, that connection na, हम्म that that strikes very well, because I have lot of memories हम्म related to Vasai, because वहाँ का वो याद आता है ना कि उस टाइम पर जो बेकरीज हुआ करती थी, जो मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे, इतनी मेमोरीज है वहाँ की। आई थिंक तो व्हेन आई और आई थिंक जिस तरीके से आप हिंदी बोलते हो, तो आई रिमेम्बर ऑल ऑफ देम। इवन दे यूज्ड टू स्पीक द, जैसे ना जी, आपको आइडिया ना मुंबईया हिंदी कैसी थी, मुंबई में हिंदी कैसे बोलते हैं? हाँ, हम लोग को पाव वाले बुलाते हैं, जो हाँ। गोवन बस लोग गोवंस। मुंबई में है ना, पाव वाला। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, मैं गोवा में एक एक मेरा गोवन फ्रेंड है, सो ही इज फ्रॉम हम्म गोवा, एंड उसके यहाँ मैं खाने पर गया था। ही हम्म इनवाइटेड मी फॉर अ डिनर व्हेन आई वाज मुंबई, इन मुंबई ऑलमोस्ट फॉर 5 years बैक। सो घर में खाना बना था, तो दे हैड केप्ट बिरयानी एंड ऑल दोस थिंग, बिकॉज बीइंग ए नॉर्थ इंडियन, बिकॉज मेरा जो रूट्स है फैमिली का वो यूपी में है, लखनऊ हम्म क्या आता है। तो हमारे यहाँ क्या ना, खाना पीना थोड़ा वैसा रहता है कि रोटी बनता रहता है हमारे यहाँ पर, राइस हम्म उतना नहीं है, रोटी वी नीड, वी हम्म कांट सर्वाइव विदाउट रोटी। हम लोग को चावल चाहिए। चावल, हम लोग हाँ का हाँ, हम लोग का ऑपोजिट है। हाँ, तो वह क्या हो गया ना कि वहां पे सारा खाना रखा था, तो आई वाज सर्चिंग फॉर रोटी, सो ही हम्म रियलाइज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ही सेड, क्या वो रोटी खोज रहा है क्या? मैं कहा हाँ। बोला रोटी नहीं है भाई, यही खा, यही पड़ा है यहाँ पर, यहाँ नहीं मिलने की रोटी तुझे। सो दैट इज द थिंग। एंड और आई थिंक जो टाइम होता है ना क्रिसमस का, आई थिंक दैट वाज हम्म फिनोमिनल। बहुत सारी मेमोरीज हैं यार क्रिसमस। आई थिंक यू हैव हिट 1000 Oh, सब्सक्राइबर्स। हो माय गॉड, ओ, सानवी, कांग्रेट्स, थैंक यू सो मच। यस, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर, कांग्रेचुलेशंस। फाइनली फाइनली यार, क्या बात है अच्छा हुआ मैन, इसके लिए तो एक आज। स्पेशल स्पेशल ओकेजन है बहुत आज तो। एंड आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट दैट, आई थिंक मैं या आपकी स्टोरी का पार्ट बन गया, आई कैन से यस नाउ, कि व्हेन यू हिट द लैंडमार्क ऑफ 1000 आई वाज विथ यू लाइव। यस 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 यस, फक, आई एम रियली एक्साइटेड। हो गया 1K, हो गया 2 साल। क्या बात, 2020 जून में चालू किया था, ओहो, और 2022 में 1K, नॉट अ बिग milestone, but every milestone is इज, encouraging for me, and I always like to enjoy तो the small small little ब्रदर things. आप वो स्टोरी बताओ जो आपने फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था। कैन यू रिकॉल दैट मेमोरी व्हेन यू अपलोडेड योर फर्स्ट वीडियो? हाउ डिड दैट हैपन? सो बेसिकली तभी लॉकडाउन था, और जूम ऐप, इट वाज वेरी फेमस, एंड सब लोग घर पे थे, एंड people who we used to not talk to also, that time we started talking to, सब हाँ, लोग यस। free था, and we used to, every evening we used to talk, that also on Zoom. So what happened is, I had plans to start a podcast channel, but first episode, not even created anything, and inviting a guest does not make sense, because no one will come, because in the starting, no one believes you. uh, so what I did was, I just called two of my friends. Okay, they are there on my first episode as well, which is Priyanka and Sachit. Sachit is my cousin brother, and Priyanka is my friend. So I just told Chal, we'll have a Zoom call. And I said, I'm just recording it, because I just, using this Zoom, and it's a new laptop or something. ऐसा कुछ तो बोला था. And I said, just recording it. And then I started, talking ऐसा. And in the group, there is always one person who starts that ghost thing, and then उसके बाद चालू. तो I just put little bit about ghost. I said, अरे मैंने इधर देखा, कुछ कुछ तो कुछ कुछ देखा. खलास, उसके बाद, if you see the first episode, the conversation is just how we are talking right now, हाँ, just free flow and all. क्योंकि क्या होता यस, है, if you invite a guest, then they become anxious, they start हाँ, shivering, they get nervous, कैमरा के सामने क्या बोलने का, वो ये this that इट and all. बिकम्स क्वाइट फॉर्मल, सो वो हम्म, मतलब वो खत्म हो जाता है, उसके अंदर जो इम्प्रॉम्प्टूनेस होती है वो। हाँ,
So the stories were natural, it was fun, and it was more of like a comedy thing. But yes, there were some good horror stories which we shared, and then that is how that recording, a raw file, got converted Mhm. into my first ever episode Oh, of wow. my podcast. And initially I had started thinking that I'll talk about everything, whatever I want to talk. Each episode I will take a different topic. But then I started noticing that I started getting views and likes and all only on the horror content, and people who Mhm. have subscribed to my channel are Mhm. only enjoying horror. Like Sanvi, even Sanvi, who's there right now, who said check your Mhm. 1K subscribers. She also Mhm. discovered me, and from then she's following me and she's always there. Mhm. So people started enjoying horror. So I picked a niche and I said, "Khalas, now iske baad only horror, horror, horror." But I want to do horror, but in India, because the Mhm. stories from West and all ho gaya, bahut ho gaya. Many channels are Mhm. there. They have covered, about West. Japan में ये Mhm. हुआ, US में ये हुआ, बस हो गया. India में Mhm. horror books, Mhm. horror authors, podcasts, so many things are there. And my main thing Mhm. is, being an Indian, we have to support the Indian creators Exactly. so that tomorrow we also can be recognized. Yes, yes. But I'm Exactly. very happy that 1K subscribers, I have crossed 1K subscribers. So, I don't know. brother, I think इस Hmm. खुशी में ना you should do a horror Goa special. Definitely, I'm going to. You gave me a good idea of having a Goa series, because Goa series. yeah, because there is one episode on my channel. It's called as the Dimelo Haunted House. Ah, I have heard that. आपने The सुना हुआ? lockdown story. Our lockdown हाँ, story. हाँ. So that is submitted by Mhm. one of my close friends from Goa. Oh. Or I don't want to say this on online, but Mhm. many people in Goa, they have a different kind of getting high. You must have Mhm. understood what I said. Ah, yeah. So he told me that story, and he was actually crying when he told me the story. So Mhm. when I heard the story, first of all, I didn't believe it. I asked him, "Is it your story?" He said, 110% this is my story. You go for Mhm. it. But then I Mhm. told him, "See, boss, I will not take your name. I'll change all few details and I'll put it." Mhm. So that video is the most liked video, and many people, whoever discover my channel, first they discover that video, because that's like the main video which I have Mhm. kept pinned on my channel, and Mhm. people enjoy it. And thanks for the idea that uh, I will do a Goa series. So Three Yeah, Kings Church and whatever. I'll work on my strength now. I Goa, think Goa, that Goa. I think मतलब गोवा का ना मैंने वो सीरीज देखा था जो 101 हॉन्टेड सीरीज so Hmm. I think that I found Old it very Bastora Road. fascinating. Old Bastora Road, that Baga Creek drowning, Hmm. Hmm. That and was scary. that was scary, and that was then कि and there was a story that related to that uncle's sister. Do you remember that? Ha, ha. Yes. That small girl is there, no? Yes, yes, Brother, small girl is it is a brother brother. and Yeah, sister. Yeah. yeah, I yeah. seen So all that that. I seen I mean, all that. I don't understand why they have stopped making. They have discontinued that series. That was fascinating. I mean, they were doing Ha, a yeah. wonderful job. Even I Hmm. have written them several times. That why have you guys stopped? You should start it yet again. Yeah, And they should start something like that. and अच्छा उसके बाद ना इन्होंने वो रामसे वाला स्टार्ट करा एंड पीपल हैव ब्लास्टेड देम इन द कमेंट्स कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस आर यू गाइस गिविंग आफ्टर गिविंग दैट सच अ फिनोमिनल कंटेंट बट आई थिंक I यू think शुड so. डू They are not stick to horror, ना. वो लोग हम्म सब ट्राई हम्म करते हैं ना वो लोग. हाँ तो बट आई थिंक रामसेस का भी अलग एक अलग ही इसके अंदर स्पेस है इस हॉरर जॉनर के अंदर अलग ही उनका स्पेस है रामसेस का hmm. the way they used to depict the stories that was phenomenal. I That is mean, crazy. that's crazy. But I think this Goa idea is fantastic. That you can do Goa. I think I have some stories related to Delhi. I can share with you, so you can have a Delhi special series.
Yeah, just before we go ahead, Sanvi is asking, what are you guys saying about? So, Sanvi, there is a YouTube channel called as 101 India. In that, you just type horror or Goa Horror Stories 101 India. Okay, if you want, I'll put that link in my description after the live stream. Check it out. Trust me, you will get scared for sure. And It's really, and really brother, amazing. I think you should see the channel of Mr. Waqar Raj. His channel's name is Science and Paranormal or Yeah. Paranormal You and told Science. me. Yeah. You Yeah, told so me. go through his channel. He has got some very interesting content, Hmm. and I think you should try to get him on your channel. I will try to contact. Actually, the problem is, I'm in the Gulf, so your हाँ timing का ही problem है. टाइमिंग का और इशू my work is from Sunday to Thursday. ओह So timing का is a problem है, because some people are free in आ, the evening and that time I'm still at work. और अभी हाँ it's just 9 o'clock. तो नाइन ओ अभी क्लॉक इंडिया एंड में कितना रहेगा? 10:30 11 ना? हाँ इट्स ऑलमोस्ट 10:45 इट्स अराउंड Hmm. 10:45 इन इंडिया Yeah. So, but slowly. But right now, I'm going to celebrate that, I've Yeah, I reached think one. this deserves a Mm, celebration, grand yes. celebration. Because I think we were just talking कि अभी 1000 कभी होएगा, but I think Mm, वो है ना कि एक विक्टर ह्यूगो का कोट है ना, हाँ. no one can stop the no one can stop I don't क्या ना, let No me one can मतलब stop थोड़ा anything. Khalas. हाँ stop anything. That was a Victor Hugo's quote कि हाँ no one can stop the idea whose time has come. So I think your time has come. अभी आपका टाइम आ गया है. Yes. So सबका nothing can टाइम आ stop you. गया, मेरा टाइम आ गया अभी. But I'm really हाँ excited. I'm really excited. I had never thought that I'll be on a live stream and then I'll cross 1K. Every day getting up, checking, हम्म refreshing the app. कभी होएगा 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर. Finally. But तो कहते हैं ना excited देने and happy. देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के. So it's Mm. something like that. Yeah. Right. So जब भी आज है ना I think you were around 9:45 something Yeah, when you started the 9:45. stream. Yeah. So So I last think like so. I छक्का will लगा not. I will not you. close the stream till 1 million. The stream will be on. So और 10 साल. नो नो आई डोंट थिंक 1 मिलियन टाइम लगेगा अभी आपने जो सबसे कहता है ना कि पहला 1000 सब्सक्राइबर इज मोस्ट The डिफिकल्ट थिंग टू toughest. गेट Yeah, most toughest difficult. thing to Yeah. get and I think last 10,000 subscribers are easiest to get Hmm. so when inshallah you will soon Inshallah. hit the mark Inshallah. of 1 million Inshallah and हो जाएगा. I pray कि मैं भी तब भी लाइव पर रहूं when you hitting that mark Please. Now तो I every live session you have to come. So एक subscribers बढ़ माइलस्टोन जाएगा. मुझे बहुत नहीं मेरे लिए बहुत एक मेमोरेबल आई थिंक इवन आई व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी इज दैट आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मेमोरी Yes, ऑफ and I'll ऑफ दैट always मोमेंट remember you. Always. And थैंक्स that ब्रदर also थैंक्स वसई का बंदा है तो ओह always. हाँ बिल्कुल वैसे ही तो खैर अपना मतलब वो है ना कि अभी नॉस्टैल्जिया हो जाता है देखते हैं जब भी हाँ, वहां पे अभी तो भी वो वसई फोर्ट है हमारा भी उस दिन वसई फोर्ट के बारे में था तो हमारा भी वो हिस्ट्री में था ना वसई फोर्ट का चैप्टर तो हमको हुँ, है ना फील्ड ट्रिप पर लेकर गए थे स्कूल वाले तो फिर हुँ, वहां पे किसी ने मतलब क्या होता है ना स्कूल में जैसे क्या होता है ना कि कुछ एक बंदे होते हैं क्लास में जिनको एक चुल मचती है इनको बताने की हुँ, सो दे सेड की घोस्ट है वहां पे घोस्ट है तो वो है ना कि अभी थर्ड फोर्थ के बच्चे तो कितना ही दिमाग होता है उनके अंदर की कितना ही सो मतलब वही है कि हम भी बोला कि अरे भूत है यहाँ भूत है वहां भूत है वो देखो ऊपर खड़ा था फिर हुँ। वो है ना कि अभी एक बार ये कहानी बता दो तो उसके 10 वर्जन बना लेते हैं अपन हाँ, बच्चे भी ट्रू, हाँ 100%. तो जब बट आई फील मेरे को लगता है क्योंकि एक हम्म आर्टिकल था, मुंबई मिरर, मुंबई मिड डे कुछ तो था, एंड दैट हम्म आर्टिकल आई फाउंड ऑन द इंटरनेट. Small हम्म article where I think so I shared this story on the last stream as well, where हम्म a female was there back then, you can say in early 80s or something, where she used to do black magic and she used to stay. Because हम्म still now in some parts of the fort, because the fort is big, बहुत बड़ा है. So in some हम्म parts of the fort there are still small houses. हाँ So that female used to do black magic, and the villagers got to know, and then they started attacking her to kill her. हाँ But she said, no, I will not
die in your hands, and she jumped in the well. So Well. there is a well somewhere, big well, Mm-hmm. and apparently they say that well is haunted because that female's ghost is still there. Oh. And no, I'm not joking, I'm not telling lies, but हम्म, मेरा कॉलेज ना उधर ही था, वो जीजी कॉलेज, ठीक है? अच्छा. So there are some couples, they used to go bunk the lectures and all, in the afternoon time they used to go. And then they हम्म, have told us few stories that in हम्म, the afternoon time when there is no one, they could feel someone. हम्म. Like, kuch to like, when someone is there in the room, or someone is there near You, you, watching you, you can feel that. you can So feel the presence. yeah, so they could actually feel some presence. Yeah. So, and this is and this is from people who I know, and this is not the people like they like ghost stories or they like horror content. They don't like anything. It's just Well, like their couple. You know what couples go to ah. do in the abandoned हम्म, fort. हम्म. So instead of that, the ghost started kissing them, and गांड फट के वापस आ गए वो लोग. सो बट आई मीन वही चीज है कि इंडिया में एक चीज होता है ना कि बहुत एक वो है ना कि एक स्टीरियोटिपिकल हॉरर स्टोरीज उसमें एक बहुत ही टेम्पलेट है. आई डोंट नो Hmm. व्हाई इंडियन घोस्ट को व्हाइट पसंद है और कोई कलर पसंद नहीं आता इंडियन घोस्ट को. White दैट व्हाइट sari. साड़ी. हाँ, व्हाइट साड़ी, व्हाइट कुर्ता. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लाइक एनी अदर कलर. That is the same thing, what you told me in the starting, wo coin wala story. It's कोइन just वाला. carried हाँ. forward to generations and generations and हाँ. generations. और वही दूसरे पैर problem. उल्टे होते हैं, और दूसरे पैर उल्टे होते हैं. हाँ, आई डोंट नो उनका भी हाँ. मतलब कुछ प्रेन वगैरह आया था क्या पैर में, ऐसे भूत लोगों के कि पैर ही उल्टे होते हैं सबके. There is another story हम्म. on Naigaon railway station. So back हाँ. then the last train used to be, I think so, 1:30. ये अभी 5-6 साल पुराना का story है. It was 1:30, 2:30 कुछ तो last local था. हम्म. And there was a friend of mine. हम लोग हम्म. नायगांव में पार्टी कर रहे थे, हम्म. और उसको घर पे जाने का था, एंड शी डिडंट हैव अ बाइक. तो हम्म. वी लेफ्ट ऑन नायगांव स्टेशन. सो शी हैड टू हम्म. टेक द नायगांव स्टेशन एंड गो टू वसई. तो शायद से वो हम्म. लास्ट लोकल था, एंड देयर वाज हम्म. नो वन ऑन द प्लेटफॉर्म. जस्ट द क्लीनर, जो कुत्ता बैठते हैं ना, वो हम्म. कोई नहीं था. हम्म. हाँ. So she started walking, and she started walking towards Virar side, हम्म. because हम्म. she had to get down and she could take rickshaw from there. So she हम्म. seen one lady, old lady, sitting there. हम्म. Okay. And she didn't speak to that lady, nothing. She just stood there in the side. The train came, and in the train also hardly few people were there. So she entered the train. Okay. हम्म. And then that auntie started getting up, coming towards the train to catch the वो. train. So that auntie, हम्म. that my friend is saying, come inside. हम्म. So she's trying to reach the door, but she's not reaching. And ओह. then, this female, she's trying to get down and saying, Auntie, aa jao. But that हम्म. auntie, she started smiling and हम्म. laughing in such creepy manner that हम्म. that my friend started screaming loudly. हम्म. But the best part was she didn't get down from the train. हम्म. Half leg was there. She was almost going to get down ओह. from the train, but she didn't get down. And she ओह. just went. And then she could see that that lady is just laughing. Now, हम्म. हम लोग को पता नहीं ये घोस्ट है कि वो औरत पागल थी. We don't know. हम्म. हम्म. But her experience, और उसके बाद हम्म. till date, if she's coming for a party in Naigaon, हम्म. she will stay overnight in someone's house. She will हम्म. not go back. हम्म. क्योंकि हम लोग कॉलेज में थे ना, so we used to have lot of हाँ. parties नायगा वैसे इधर उधर. हाँ. So उसके बाद never. So पता हम्म. नहीं, because she was little bit tipsy, she was drunk also. So I don't know They might exactly have क्या हुआ. they might have hallucinated or something else. Could have Maybe. been something else. Who And knows? there was no one else also to check हाँ. with her, Verify कि whether it's true actually or she was not. Yes. laughing or this. But she was saying उसका smile इतना creepy था ना, हम्म. कि she was shivering till she reached Vasai. She was actually shivering like that. Shivering. So that was I mean, scary. And आप trust अभी me, वो. Naigaon and Goa, हम्म. Naigaon, Vasai, हम्म. Goa, these are places ruled by Portuguese. हाँ, so they have a very similar kind of culture. And Culture and I Vasai think I, Fort, I think Vasai is scary. even called mini Goa. Yeah, 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 yeah.
Vasai is even back called mini Goa. back then when Portuguese was ruling Mm-hmm. Vasai, it was like the headquarters, हाँ, and then Goa. So it was like the Goa. headquarters. कुछ तो था. हाँ, So बट आई थिंक that's यू आर the story. टॉकिंग, जैसे भी नायगांव के बारे में बात कर रहे हो, तो आई रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन मुंबई, सो व्हेनेवर वी यूज्ड टू गो टुवर्ड्स दैट साउथ मुंबई, दैट चर्च गेट एरिया, सो Hmm. नायगांव दूसरा तीसरा स्टेशन आता है, आई थिंक वसई के बाद नेक्स्ट नायगांव ही है, और उसके बाद Hmm. भाईंदर, मीरा रोड एंड ऑल दैट। Hmm. तो मैं हमेशा देखता था कि नायगांव में सबसे कम क्राउड होता था, ऑलमोस्ट चढ़ने वाले ना के बराबर होते थे लोग, चढ़ने वाले होते ही नहीं थे नायगांव में। हाँ, तभी अभी भी हाँ, कम है, बट उतना कम नहीं है अब। वसई, सी वसई नायगांव, नायगांव बीच हाँ, में आता है वसई के, हाँ, हाँ, but there is a separate platform. But there is हाँ। one interesting thing, I don't know हम्म, if you know about हम्म, Vasai. So हम्म, Vasai was extremely big when, like in area wise, when हम्म, Portuguese and when the Maratha was ruling. I don't know, हम्म। उसका नाम याद नहीं है अभी। कोई तो था, कोई The मराठा the रूल। one who the हाँ one who टुक captured हाँ took over Vasai from the Portuguese. I think it was हाँ Chimaji Appa. हाँ Who's चिमाजी अप्पा। Every time I forget. ah चिमाजी अप्पा। no, because I So remember na कि that you used to have a Chimaji Appa ground in Vasai where you used to हाँ हाँ have a cricket matches. हम्म। हाँ चिमाजी अप्पा। So Vasai was like the fort area and all, and Naigaon was the battleground. So that Ah, time when they used to have the wars and fight, जो भी था, that was the mm-hmm, battleground. mm-hmm, And my friend's father, mm-hmm, उसका दोस्त, he was like a person who used to study history, mm-hmm, and he said that mm-hmm, where your buildings are there right now in Naigaon, mm-hmm. it is under graveyards, because they Oh, used to dump bodies there. When they used to have ah, war, they used to dump mm-hmm, bodies there. mm-hmm, So there are lot of stories in Naigaon, but unknown, unsaid, and mm-hmm, till now there are some mysterious stories. There is one story which I'll tell you. uh-huh, So there was a family, mm-hmm, okay, father, mm-hmm, mother, and one son. mm-hmm, Father used to work initially, but uske baad he started drinking and he got addicted to alcohol. And mm-hmm, there is a bridge in Naigaon, which is mm-hmm, connecting from Naigaon main area to the Gao side, towards mm-hmm, the more interior side. So on the bridge, it's very lonely. So all the drunkards used to go that back then, and they used to drink. mm-hmm, mm-hmm, So one man, I mean the man who I'm talking mm-hmm, about, one evening he got vanished. mm-hmm, They didn't find his body, they didn't find anything. The family mm-hmm, tried contacting the cops searched for him for 6 7 months. mm-hmm, Nothing happened. mm-hmm. Then what happens is, when as a family, when something like this happen, and there is Mm-hmm. science does not have any explanation, police does Explanation. not have any explanation, then you go towards Uh, the supernatural, when you go towards the ah, paranormal stuff. paranormal. So that female, the wife, she took help from Mhm, some Pandit ji Baba, koi to tha. mhm, And he said that your husband mhm. is still alive, Ah, but he has been taken by someone. mhm. Where he's taken, we don't know, but he's Oh, still alive. But guarantee that he's not going to come back. oh, three. So what happens And is, like, if your loved one suddenly disappear, you need to mhm. have like a conclusion कि उसके साथ क्या हुआ, मर क्या गया हुआ? कि, Exactly. exactly. Ah, So that wife, she was anxious and she didn't know what to do. But after this conversation with the Panditji, जो भी था, she finally understood that, हाँ, okay, he's safe, वो आने वाला mhm, नहीं है, but chal, I can mhm, live my life peacefully now. mhm. I cannot, think about him 24 Ah, hours. So uh, that was like a auntie. We were small that time. हम लोग स्कूल हाँ, में हाँ, था, हाँ. like, 7th 8th standard में था, and this happened that time. Mhm, तो till date, till date mhm, mhm. वो जिंदा है, but पता नहीं वो कहाँ पे, पता नहीं कहाँ है वो. कहाँ पे. नहीं, जैसा And आपने he अभी was a बताया ना, decent person.
हाँ। कुछ बैकग्राउंड नहीं, कोई मारा-मारी कुछ नहीं। जस्ट ही हुँ, यूज्ड टू हुँ, ड्रिंक, हुँ। इन द हुँ, हुँ, इवनिंग हुँ, जस्ट हुँ। वो देसी दारू पी के किधर भी सो जाता था। निकल जाता था वो। हाँ, सो पता नहीं नहीं वो ऐसा, कहाँ पे है बट है। एक मुझे सिमिलर स्टोरी याद है, द वे फ्रॉम द वन यू नैरेटेड रिगार्डिंग दैट वसई बैटल दैट मराठास एंड Portuguese fought in that Naigaon area. एक्चुअली एक बुक था, बुक में मैं ये बुक या इन दोनों मैगजीन उसमें पढ़ा था कि ये जो जब बाबर आया था ना इंडिया में, हुँ, तो बाबर की एक लड़ाई हुई थी राजस्थान में राणा सांगा से। इट वाज फॉट अराउंड अजमेर, मॉडर्न डे अजमेर और समवेयर, मतलब उसके आसपास में हुआ था। तो वहां पे कहते हैं कि जो बैटल हुआ थी उसकी, मतलब लोगों को आवाजें सुनाई देती थी। कई बार क्या होता था ना, दोपहर के टाइम पे एकदम से जब भी गर्मी होती थी ना, तो लोगों को आवाजें आती थी कि लोहे टकराने की, चीखने की, बट किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। हुँ, एंड दिस यूज टू हैपन टिल अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब 1913-14 तक लोगों ने आवाजें सुनी है एकदम दोपहर में। बिकॉज यू नो हाउ इट इज इन दैट पार्ट, मतलब दोपहर में क्या होता है कि लोग अवॉइड करते हैं निकलना कहीं पे, तो कई बार ये अक्सर आवाज आती थी ऐसी, हुँ, मतलब लोहे टकरा रहे हैं आपस में, लोगों की मतलब चीखने की आवाज आ रही है। बट जब भी जाते थे उस एरिया में कुछ दिखता नहीं था उनको। तो ये भी बहुत हुँ। एक प्रोमिनेंट स्टोरी थी उस टाइम की काफी, कि एक आधी बार ऐसे कहते हैं कि जिन्होंने मतलब उन आवाज को फॉलो की करने की कोशिश करी, वो दे नेवर केम बैक। Scary, scary. All unexplained things are happening. एग्जैक्टली। I have another story before we wind up because it's हाँ, almost 1 hour 30 आइए। 35 minutes. या Uh, there's a friend of mine, Priyanka, who I was talking about. हाँ। She has just come. Actually, ओह, उसने इज उसने इट? वापस धोखा दिया क्योंकि उसने बोला था कि she'll come on the live stream, हम लोग बातें करेंगे, but she's gone out. तो अभी मैसेज किया, hey Des, I'm watching even though I'm out. No problem. Next stream, I will catch you and I will make you sit for 4 hours. 4 hours live stream. So before we wind up, before we end the stream, there is a place in Naigaon. It's called as Vijay Park. For people who are from Naigaon, they will know. हाँ, But who are not from I, Naigaon, Vasai, okay. You can just hear the story. It's a fun and interesting story. So there's a cousin brother of mine. Okay, he was back then dating my cousin sister, and they were ओह, dating for quite some time. Okay, 10 साल हो गया था. And he used to do night shift. Okay, he used to work in a call center. He used to do night shift, and uska holidays it was Friday, Saturday, Sunday, and he worked in night shift for so many years that he got the routine that even Friday, Saturday, he used to not sleep during that early morning time. He used to sleep afternoon time and be awake in the night. So he was staying on rent, and he wanted to change houses and this and all, because first was staying with us, then he started financially getting strong, so he shifted to another place. So when he was shifting to this place, okay, this place is in beach complex. For people who know Naigaon, it's in beach complex, and I don't know the building name, but it is on the second floor. uh, when he was shifting, the owner said that my daughter has committed, not committed, no, my daughter was raped and was murdered in this flat. So be careful. I'm just warning you because it's better to tell you now than you move and then you come to know. So he said it's okay. I don't have any problem. I'm fine with it. But he just said that in one room there is my daughter's stuff, and जो भी घर का सामान था, it's in one room. I've locked that. बाकी का you can take it. So it is a big 2 BHK flat, और बड़ा मतलब बहुत बड़ा, and he's staying alone. ठीक है, rent भी कम था, and you know why the rent was less? हाँ, Because no one no one was ready to live in that, ready to take that, that. हाँ. हाँ. So he started staying, and he started telling me that back then, he didn't have TV and all. He just had one radio. So after every particular time, like in early in the morning, after 2 o'clock, 3 o'clock or something, automatically the radio volume used to go low.
Like, Oh. he had a radio, and he used to put it on loudspeaker, because he used to have bath, or Mhm. used to cook something, kuch to kaam karta rehta hai. Suddenly he used to Mhm. feel that it is gone low, and extremely low. And then he goes Mhm. and he's checking that, that वो volume button to full hai. I don't know, Mhm. अच्छा. kaisa ho raha hai. So this was the first Mhm. incident. It didn't Mhm. strike him. Second incident Mhm. was that sometimes, Friday, Saturday, and all, he used to Mhm. go to meet his friends and all, and he used to stay there only. So the Mhm. neighbors and all once asked him, "Are your Friday, Saturday also you're awake?" Neighbors ka Mhm. bahut panchayat rehte hai, they want हाँ, to know हाँ, what हाँ, is happening. हाँ. So they are saying, "Are you're awake this time? Why the music is too loud and this and that?" So he's telling them, "See, boss, I was Mhm. not there this weekend. Most of the weekends Mhm. I go meet my friends, chill, this, that, and all." So what Mhm. happened apparently is, when he was Mhm. not there, the Mhm. neighbors could hear Mhm. something. Like, Ah. like when you're in the house, you're just Yeah, taking the activities. bottle, You keeping, keep you're moving. moving, putting the There's a lights lot of on. activity. Yes, हाँ. yes, yes, yes. So उसके बाद he Mhm. told us, we got scared, Oh. क्योंकि we were there staying 2-3 buildings away. We got scared. Mhm. But Okay. I have not seen a person. Hats off. His name is Rajan. Mhm. I don't know if he's Mhm. watching right now. Mhm. He is a person who I get inspired with, because he does not get scared at all. I mean, You it takes know, a lot of courage. बीच में they had even broken up, Oh. uh, for some reasons. Mhm. And he used to sit till 4-5 o'clock in the morning. He used Oh. to smoke a cigarette. Mhm. Music is on and lights are off. No lights on, Mhm. nothing. And I Mhm. asked him, boss, where do you get the courage? You know Okay. that you are staying in a place which Supposedly might be haunted place. haunted. Yeah, because the girl who was staying in this house was raped and murdered in Mhm. this house. How can you stay? Mhm. So he said that, he's also from Goa basically. So from Ah. where he's come, he Mhm. has seen so much that abhi usko Mhm. kuch nahi lagta, he just हाँ, फर्क नहीं ignores. पड़ता उसको भी. He just ignores. But but the best part was, नायगांव में कभी कभी पानी का कमती रहता है हाँ. ना. Mhm. तो मेरे घर में पानी खत्म, तो आई टू गो टू हिज हाउस. तो मैं 9-10 स्टैंडर्ड में था, एंड आई हैव Mhm. टू हैव बाथ. Mhm. आई एम नॉट क्लोजिंग द डोर ओनली, आई हैव केप्ट द Mhm. डोर ओपन. जिसको देखने का Mhm. है देखो. I am having Mhm. bath by saying prayers. Our Father, what in heaven. Sub में everyone is coming. See, the best part is, purposely he will make noises. My हाँ. cousin, to make me scared. हुँ. But और whenever I used to go to that house, I used to feel negative energy. Like, कुछ तो था. स Now स I don't know. This is in my mind because they have told me the stories. Yeah, I yeah. was it It's a kind just of feeling of being watched? Something yes, like yes. that? Something That you like are being watched by. very creepy. And the I mean, best it, part is ना, आपने जो बोला था कि, if someone tells you not to do that, you will do that. you वो would, बंदा भी same है. So that room was locked with her stuff, and they have told, do not open this. and he opened that. He opened the door and he seen. और मैं और उसको पूछा क्या था उसमें. He said that, हुँ, there was like the photo frame and, the cupboard, this old that and all. stuff and all that. Old stuff. I said, why, dude? This is something which is things of a dead person, and that also not हाँ, natural death. हाँ. But after that, we started doing investigation, and we got to know people who stayed before that also, हुँ, हुँ. experienced. So whoever has stayed in that house. So there are 3 people Has who I know who have stayed in that house in a span of like 5-7 years. Everyone and has they felt something. and and they have all testified the same thing that he went through. Yeah, means everyone had a different experience, हुँ, not हुँ. similar experience, but everyone हुँ. felt something in that house. That is I why mean, immediately whoever used to stay there, they हुँ, हुँ. left. But he was the हुँ, only person. उसको हुँ, कुछ हुँ. फर्क नहीं पड़ता है. I Was mean, it's quite sitting there. fascinating. It's I'm quite telling fascinating. he It is takes a a lot very of strong courage. person. Yeah, very very It takes a lot of strong. courage to do that. If some मतलब चाहे कितना भी strong person हो, for a moment you will be you will get scared if you would be told that you are sitting in a house that is haunted.
So I mean, hats off to him, his courage and his character. What a Uh, great guy he is. his stories, there are a lot of stories. There are a lot of Uh, stories because uh, गोवा में ना जो हम लोग हाँ क्या बोलते हैं ना वाड़ा वाड़ा बोलते हैं मतलब it's like a हाँ small village. हाँ हाँ In the village also there's like a small area where we come from. So my mom is from हाँ. there and he's also from that Vada only. But So there are oh so many stories now, so many stories. I think so. Just 5 more minutes and we'll end it with no this no last no. story. Sure. Please go ahead. Last story. I'll keep it short. नहीं बहुत So this fascinating is लग रहा है. You please take your time. It's quite fascinating to hear that. You please take your time. yeah. This is what my mom told me. So my mom is a tailor, and Mhm, when she was young, only she started tailoring, and but mhm, mhm, to come to this level, she had to practice a lot, and to mhm, practice, she had to practice late night. mhm, So my grandfather had such a big mhm, property in mhm, Goa that one mhm, place in the property they were staying, and then other places they made small row houses and they started giving it on rent. mhm, This is what Goans do. mhm, So my mother is stitching. She's maybe in her early 20s, mhm, and in one of the row houses there was mhm, a female who was uh, from you can say from south side Chennai side, say, because many mhm. laborers and all also come to do Uh, work and all in Goa for construction work, and then they take all these row houses. So back mhm, then there was a female from Chennai or something, and they had a family, they were staying this that and all. mhm, Suddenly one mhm, night she can mhm, hear this mhm, female screaming mhm, loudly. mhm, So everyone went, क्या हो गया, what happened, what's wrong, this that and all. mhm, mhm. So they came to know that she's been possessed. Oh. Okay. And she said something which my Mhm, grandmother, my mhm, mom's mom, she got scared because okay. what she said was Mhm. something what had happened when my grandmother was young. So Oh, there's a backstory of this. So this is very okay. interesting. Yeah, So yeah, now please. let's go back to where Mhm, my grandmother was young. So when my mhm, grandmother was young, she just got married, and that time also the row houses were there, mhm, and that time one Rajasthani female was there, and mhm, uh, they like a family, like mhm, husband, wife, and this that and all. mhm, But apparently, what happened is that the mother-in-law used to mhm. trouble this Rajasthani female. Ah, Okay, and this female had a likingness of gold. I want to oh. wear gold. I want to wear the bangles. I want to wear all that sari and this and that and all. Mhm, But the husband and the mother-in-law used to not give. They used to trouble and torture her. mhm, So that is why mhm, one evening she mhm, burned herself. mhm, And when she burned herself, mhm. she ran from the row houses till my grandmother's house. So my Oh, grandmother's house is on the slope little bit, oh, and the row houses was down. So she ran because of that fear and of that fear and she's this. getting burned. She ran Mhm. towards this, and then she fell down there. They tried to Oh, save her, but could not save. you couldn't say. Okay, हो गया ये हो गया. She died, this that and all. Jump cut. अभी 20 साल के बाद this Mhm, female, who mhm. is a South Indian female, she is talking in the Rajasthani accent, Oh, oh and no. she's telling the same thing what this Rajasthani female used to say before she dying, that I want to wear Oh. gold, I want to wear this clothes and this that and all. And Mhm. my grandmother was like she knew, she could understand all the other languages and all. Uh-huh, uh-huh. So when she heard this, she said, "Oh shit, ये कैसा हो सकता है?" Ah, Because this female, the Rajasthani female, she died 20 years before. yes, that. Yes. Then they came to a conclusion that oh shit, this female has been possessed. By So that, what by they the spirit of yeah that lady. yeah by the spirit of that lady. So what they did was they said okay. And back Mhm, then there mhm. were priest pandit tha, but it was not that well known.
priest and this Mhm. that and all. So Mhm. कोई तो एक बंदा था. So what he suggested is that, just give her gold, give her the dress, let her wear it, Mhm. and then she'll Mhm. be happy and she'll go. And exactly Mhm. the same thing happened. So हाँ, from around the houses and all, they collected some, gold. gold and clothes and all. She wore that. She हुँ, danced. Okay. And हाँ, this was the creepiest part, where everyone is sitting हुँ, हुँ, and they're watching her dance. A South Indian female wearing a Rajasthani वो outfit, and she's dancing the folk dance, whatever they do, the Rajasthanis. या And after dancing, she just fell. हाँ, And uske baad, I feel she left हुँ, uh, हुँ, her body. And ओह! then, the South Indian female, she started crying, and then everyone said prayers, and ye sab ho gaya. हुँ, But हुँ, हुँ, the thing is, now हुँ, the हुँ, scariest part is हुँ, that my हुँ, mother used to stitch late in the night. She used to हुँ, practice. हुँ, 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 And हुँ, हुँ, till date, हुँ, I हुँ, don't know till date, but till when she was young, till she didn't get married, हुँ, हुँ, she could hear every night that female हुँ, screaming, like how she screamed when she got burned. And the गुड वन scream is starting from one point and going to another point. So the हाँ, volume is like, it's like high, and then जैसे दूर जाता है ना, the volume हाँ, कम हाँ, होता है, इट like that गेट्स it is. स्लोवर So लो हाँ, so every night at a particular हुँ, time हुँ, she can hear हुँ, this. ओह! And my mother is kind of religious, so हुँ, हुँ, she, हुँ, हुँ, whenever she used to hear this, she used to ignore it, and she used to say leave हुँ, it. हुँ, हुँ, But हुँ, this हुँ, was one of the creepiest story I heard, that till हुँ, हुँ, date she can हुँ, hear हुँ, that female screaming. So according ओह! to my mom, the ghost has not gone, like she has not gone, she's still there. जस्ट Because she was burned, and she died. But her हाँ, last wish was to get the bangles and the outfit and all. She got that. She got fulfilled. so she left the But body of that South Indian yeah, woman. yeah, that's the long back only she left. हुँ, But हुँ, till date, they can hear people. They can hear, that female is screaming, and like हुँ, how you हुँ, get हुँ, burned and you're screaming. हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा ऐसा आवाज आता है. हुँ, हुँ. No, I think that's quite fascinating. I think that's why I said you should have a Goa special I so that we am. can I get am. some interesting stories. Because I Now, think trust me. What is your real Mhm. name, by the way? My name is Aviral. Real name is Aviral. Actually, Rohit that कौन है? He's your ghost, I think Rohit. so. Oh, it can be. So, Aviral, to be Yes. very frank, you're Hmm. one of, like, the first person who have Hmm. suggested me something good, which is a Goa special. Okay, if Hmm. and any more suggestions, you can keep telling me. And No, the second sure. thing is, you are a Hmm. part of my 1K subscribers, so it's always going to be special. From today Sure. Yes. till I die, it's always going to be special. Thank you, brother. Thank you So, so much. thank you so much for coming. And thank you It so much was for having me because it was like an awe moment for me because I have been hearing your stories. yeah. So it was fascinating for me to be here, and especially मैं चाहता था यार एक उस दिन that day I couldn't join because I was in the office, I was working, Hmm. so I was in a different zone. But today since I am very free, तो आज फिर वो है ना कि अभी almost more than 90 minutes we have spent more than 90 minutes Hmm. chatting, but वो हो time गया का पता भाई. नहीं चला. Yeah. But this is nice. Yeah, अच्छा है. Uh, Conversation अच्छा है. Because it's exactly. all about paranormal, ghost, this, that, and all. Mm-hmm. Exactly. But what I came to do, I didn't do Mm-hmm. that. Reacting to all the horror Uh, videos, because I have collected few horror clips from Instagram, from Facebook. mm-hmm. Mm-hmm. I've connected to many groups on all this where people share all this. Mm-hmm. So I'll be reacting to that next live session. So this was Mm-hmm. all about talking about ghost stuff. बाकी And जैसा अभी आपने बोला ना कि that you plan to react on the horror videos but it didn't happen. Hmm, So ऐसा कभी होता है ना अभी हम ऑफिस वगैरह में कोई इवेंट करते हैं या डिस्कशन रखते हैं we keep a book club hmm, once a month on the weekend. hmm. So people often say कि यार मैं तो कोई बुक पढ़ नहीं रहा हूँ, so I tell them यार मेरे को पता है बुक पे डिस्कशन 20% होगा, बाकी 80% डिस्कशन ऑफ द टॉपिक होने वाला है. But the thing Uh, is that we would be talking. yeah.
what we like and what we feel. So I think that's the best part, that we got to talk a lot about horror, and I think meeting Yeah. like-minded people is is a real blessing. I can trust me. If I have to not go now, I can talk to you for 9, 10, 20, Ah. 30. So forever I can talk to you because Yeah. there are very few people Hmm. who enjoy horror content, and there are extremely few people who like to talk. So one Ah. is you, okay, and then Ah. another one is Priyanka, who was there on my live stream and who was there on Hmm. my first ever live session. So Hmm. when such people come no, और हम लोग पहली बार बात कर रहे, can Yes, you yes, imagine? yes. And the Mm, connect, the level of connect, the level of conversation is exactly. really fun. So I think so. It's time to wrap up It's now. time to leave. Yes, exactly. Yes. So thank you so much once Okay. again. Thank you for Thank- people who are watching till now. If you haven't liked it, please like it. And finally, I have crossed that milestone, which is 1K subscribers. And from now on, it's just going to go up and up with your support, definitely. And every week, live stream on Sunday. And every Saturday or Friday, there will be an episode as well. My narrations. Let's try to do something different. If there is any suggestions, please, uh, you know, keep commenting and keep telling me all the suggestions. So, so brother, thank you, thank brother. you so much. Thank you Thank so you much so for much for having coming. me. It was a Yes, yes, it was a very special day for me, because I became yes, a part of a milestone. yes, yes, I became a part of a story that you are going to carry with yourself for yes, years and years definitely. to come. So Yes, it's a really definitely. And the pleasure. first I mean, first 1K is always special. It's I, always special than anything thank you else. so much for having me, brother. Yes, and I'll hope to see you next also. Yeah, And sure. tell your friends, tell your family, whoever likes horror content, you can Sure. tell them to check my I think channel. one of my roommate is listening to this on his phone, because I said I will be live, because I had told my roommate that I'll be live Hello, roommate. around 9:30. Hello. I heard hello So back. yeah, so he's saying hello to you. Ankit, Oh, shit. please introduce yourself to him. डर He's गया मैं. Desmond. Hello, sir. अरे सर क्या, मैं छोटा भाई है. सर नहीं बोलने. नहीं कोई बात नहीं, सब तो सर ही हमारे लिए तो। अंकित. हाँ जी, अंकित कौशल from हिमाचल प्रदेश। आई कांट हियर अंकित, मेरे को आवाज नहीं आ रहा. अंकित कौशल from हिमाचल प्रदेश। नहीं, Hello. मेरे को Uh, आवाज नहीं आ रही. brother, is he audible? Hello. No, I can't hear him. I can't hear him. Uh, Hello, हाँ, बोलो अंकित. Ankit, I am from Himachal Pradesh. हम्म. तो so मैं भी आपको नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में आने का है और आपको भी शेयर करने का है कोई गो स्टोरी. कोई नहीं कर याद देंगे। रखो. I mean, याद even रखो. he has got नेक्स्ट such a संडे good को. story. He's from Himachal, and even the sense of Himachal is all about horror. यस. सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू नेक्स्ट संडे सेम टाइम. अभी तो हो गया वक्त, 2 घंटा हो गया है. हाँ जी, तो हाँ जी। अभी के लिए थैंक यू दोनों के लिए, और आप थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग. ठीक है, मैं बंद yeah. कर रहा है अभी. ठीक है, थैंक यू। चलो. Take care. See you next Sunday. Okay, that was an amazing live session. I had plans to react to some horror content, but I could not do that. But definitely, I will be doing that next time. Okay, there were a lot of things which I had to react to, but I could not. But I had an amazing conversation with a new friend, and I have crossed 1K subscribers. So if you still haven't liked the stream, like the stream, because what happens is that YouTube will push this video so more people can reach. I can reach to 2K, 3K, 4K. And yes, subscribe to my channel if you haven't. And next live stream for sure, the first 30 minutes I will be reacting to
the horror content, and then after 30 minutes, then whoever wants to come, they can share their ghost stories, they can do anything nonsense. So अभी के लिए अलविदा, थैंक यू, शुक्रिया. मेरा हिंदी इतना इतना क्या, इट्स नॉट गुड. क्या बात करो, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है. बट एनीवेज, सी व्हेन the funniest part is when I'm going to end the live stream, there are more people coming. But it's almost 2 hours I am streaming. Thank you once again for hitting the 1K subscribers mark, which I really enjoyed. And I am going to go offline now in 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 okay. I'm just wasting your time. There are 5 people watching, just wasting your time. I'm just waiting for 2 hours to complete and I will stop it. So in 5, in 4, 3, 2, 1, 0.